ज्यादा दे दी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वहां पर किसके लिए जाना है? बॉडी सरफेस एरिया। और आपने देखा होगा कीमोथेरेपी की जो दवाई है ना, उसे देखना इतने पर मीटर स्क्वायर पर केजी बॉडी वेट नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? पर मीटर स्क्वायर। सो मींस इफ यू नीड एक्यूरेट, go for body surface area. But sometimes yes, overall health status कितनी सीवियर इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली भी हम हाई डोज और लोअर डोज को जाते हैं। एंड लास्टली अगर आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ बॉडी डेवलपमेंट, लाइक हम कहते हैं लीवर और किडनी तो पैदा हो गया, kidneys and liver is not mature one, and in that case you have to decide less or more whatever it may be. So in that case क्योंकि हम नहीं कर रहा है, ज्यादा दे दोगे तो लीवर और डैमेज हो जाएगा। जैसे ऐसे लेते हैं जिस कॉफी खा रहे हैं तब हो गया, ऐसे साइटो क्या लीवर टॉक्सिक है ना। सो इस बच्चा है उसका पहले ही लीवर और किडनी इतनी मैच्योर नहीं है और आपने डोज में भी पंगा कर दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अब मेन पर्पस क्या है जो मेनली होती है, अगर आप गो टू द रिसर्च आर्टिकल में देखोगे तो पीडियाट्रिक ड्रग एरर बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में जाते हैं। तो पर्पस की बेसिस से हम कहें तो प्रिवेंट ड्रग एरर्स। जब आपको अच्छा पता होगा, क्लियरली पता है कि कितना डोज है और ये आप सेंसिटिव है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं हम लोग बड़े कैजुअल होते हैं, टाइम की भी हम परवाह नहीं करते। अगर मुझे 2 बजे का टाइम दिया है तो मैं 2:30 बजे तो वैसे ही लेके चलता हूँ। ऐसे ही हम दवाइयों में कई बार, लेकिन वेस्टर्न में नहीं होता। 2 का मतलब 2 होता है। 2 5 बजे तो आपकी उखाड़ देंगे, मैंने देखा है। सो एरर और कॉम्प्लिकेशन भी पर्टिकुलर, और ये नहीं है आपने कैलकुलेट कर लिया तो पड़ोसी से कैलकुलेट करवा लीजिए। समटाइम्स इफ आई हैव डन समथिंग सम रॉन्ग कैलकुलेशन, दूसरा वाला बता दे कि मैडम ये ठीक नहीं था, ये ऐसे है वो, क्योंकि एक बार अगर आपसे गलती होगी ना तो आप बार-बार वही करोगे कैलकुलेशन में और वो कैलकुलेशन गलत आ जाएगी। और उसमें क्या है, अगर एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजायर्ड डोज कितना है, कैसे देना है, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, थर्ड ईयर वाले या फोर्थ ईयर जो भी, और इवन दो एमएससी स्टूडेंट्स आल्सो डू द मिस्टेक्स इन द डोज एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, सारे जानते हैं। डोज हम कहते हैं कितना देना है, टेकन बाय द पेशेंट फॉर इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, लाइक 5 mg जेंटामाइसिन 8 hourly फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी। एंड डोज रेजिम मैंने कहा शेड्यूल फॉर टेकिंग द डोज, मैंने कहा 8 hourly जेंटामाइसिन कितना 5 mg कैसे देना है 8 hourly, जिसको कहते हैं TDS 8 घंटे से देना है। So that is dose regime, and most drug doses are measured in the unit of weight, 500 mg, 250 mg, 200 mg, 80 mg, 100 mg। देखा होगा ना आपने सारे इसमें। The desired dose amount to be administered on one time, amount to be administered containing the desired dose। Next please। और कुछ ये यूनिट्स है। नेक्स्ट ये राइट्स आपने पढ़े होंगे, 5 पढ़े हैं, 5 तक आता है ठीक है, पर आजकल बड़ी लंबी लिस्ट होगी आगे, हैं फलाना राइट, दिस राइट एंड दैट राइट। बट कीप इन माइंड राइट पेशेंट। आप कई बार क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर सीनियर वाले ने बिठाकर के चाहे जूनियर को दे दिया, प्रोग्राम की वजह से आपने लगाया है, बगल में लगा हुआ था, वो बेचारा प्रॉब्लम हो गया, उसको नहीं देना था, उसको लेसिक्स दे आया प्रॉब्लम। सो मिस राइट डोज, राइट। अब ये चीजें सीखना जरूरी है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। कन्वर्जन, डोज कन्वर्जन, हम जानते हैं कि एक टीस्पून में 5 ml सीसी कह देते हैं, तो ml और सीसी ये भी गलत है, डिफरेंट है। 1 टेबलस्पून 15 ml, ये हमें रख जानी चाहिए। 30 ml 30 cc 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। कई बार स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, हम कहते हैं बच्चे इसको 200 mg लगाना है, 1 ग्राम का हाथ में, तो 1 ग्राम को इतने में कर दिया सर, वो 100 में 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम and 1 milligram 1000 microgram and 1 liter 1000 milliliter।
अब थोड़ा सा हमें एक चीज है जो पाउंड्स में 1 किलो 2.2 पाउंड्स होता है। सो अगर आप देखेंगे की कोई किताब तो उसमें पाउंड्स में लिखा हुआ वजन, तो कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। ऑन्स 8 ऑन्स का मतलब है 1 कप है, 1 ऑन्स का मतलब 2 टेबल स्पून है, 30 ml, राइट। नेक्स्ट प्लीज। डिफरेंट रूट्स, अब इनमें से किसी ने इंट्राथीकल दिया है कभी? इंट्राथीकल सुना है? हाँ देते हैं इसको, स्पाइन, वेरी गुड। सो सब ऑन्कोलॉजिकल कीमोथेरेपी में हम इंट्राथीकल रूट लेते हैं। सो दिस काफी सारे रूट्स हैं और बहुत है, मैंने लिखे नहीं है पूरे, पर आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है रूट्स, ये पढ़ते हैं सारे, मैं इनमें विश्वास कम करता हूँ, इन पर रिलाई नहीं करता, पर समझने के लिए, पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए हम लोगों को। सो क्लार्क रूट हो गया, दिस रूट, यंग रूट, ड्रिलिंग रूट, बट ये 5वें नंबर पर मुझे विश्वास है, एंड इट्स रिलायबल वन, दैट इज बॉडी स्पेसिफिक मेथड। नेक्स्ट प्लीज। सो एक एक देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा था ना उम्र पे विश्वास मत करो, और लेडीज को उम्र वैसे ही मत पूछो क्योंकि 16 से ऊपर जाती ही नहीं है। सो बेस्ड ऑन एज, है ना, अगर एज की बात करते हैं तो देखिए कि आप यंग रूल क्या कहता है कि पीरियड क्लोज निकालना है तो चाइल्ड एज इन ईयर डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, लाइक 500 mg और 1 ग्राम सीबरटेक्सिन या जो भी देना है। तो फॉर एग्जांपल आपके 10 साल का बच्चा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया 500 mg एज ए अडल्ट डोज and calculate the child dose, बड़ा सिंपल सा है, but I can't say कि सही है इंडियन सिनेरियो में, क्योंकि 10 साल का बच्चा एक हमारा 40 किलो का भी हो सकता है, 20 किलो का भी हो सकता है इंडिया में। तो भूखे बच्चे हमारे यहाँ बहुत कम मिलते हैं, या तो पूरा खिला देते हैं या फिर नहीं खिलाते, यानी माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। अगर मैं लड़की की बात करूं, अगर इनका हीमोग्लोबिन करा लूं तो 70% एनीमिक मिलेगी, 70%। और जब एनीमिया है तो फिर और देखो और पैरामीटर्स का क्या होगा। सो आप अगर आपने कैलकुलेशन देखी है, कैलकुलेशन में आपको 10 चाइल्ड के ऊपर क्या है 10, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, सो गए, देख नहीं रहा होगा। सो आप अपनी खोल लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करिए। तो क्या करना है, 10 साल का बच्चा है तो ऊपर क्या होगा, एज इन ईयर 10 हो गया, नीचे चाइल्ड एज 10 प्लस 12, तो 10 प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज कितना दिया है 500 mg। अब इसको अगर करोगे तो क्या आएगा 0.45 आएगा, 0.45 को 500 mg से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 225 mg। बट क्या ये सही है? मैं नहीं कह सकता ये सही है, क्योंकि यंग फॉर्मूला ये कहता है कि बेस्ड ऑन एज, एज अगेन हमारे हिंदुस्तान में हम नहीं कह सकते कि एज के अकॉर्डिंगली कोई भी ड्रग डोज फॉर पीडियाट्रिक लाइफ सही होगा, बट समझ लेना है यंग ये कहता है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए रूल से कहता है ये भी उम्र की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, एज के अकॉर्डिंगली सेम है, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, अडल्ट डोज को कोई कह देता है 20%। सो एग्जांपल के लिए देखेंगे व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स ओल्ड इफ इज 600 mg। अब यहां देख लीजिए 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 600 अप्रोक्सीमेटली 300 mg आएगा, राइट। नेक्स्ट, इस पर थोड़ा सा क्लार्क कहता है कि इज मोर एक्यूरेट देन द आइदर यंग और राइट। इसमें आप देखेंगे चाइल्ड वेट, अब वेट है ना, अब निकाले आप किताब, कॉपी किताब खोल लें, ये थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको। चाइल्ड एज इन चाइल्ड वेट, राइट। तो यहां पर वेट इसमें लिखा हुआ है पाउंड्स में, लिखा है पाउंड्स बता दिए थे, 1 पाउंड इक्वल टू 2.2, 1 kg इनटू इक्वल टू 2.2। तो यहां देखिए आप, मैंने लिख भी दिया है 10 ईयर का चाइल्ड 27 किलो वजन है, कितना है 27 किलो। अब इसको हमें पाउंड बनाना है तो क्या करोगे 27 × 2.2, 27 को
दो 2.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आया 60, यानी बच्चे का वजन 60 पाउंड है। और वहां पर 60 लिख दीजिए या फिर किलो में लिख दीजिए, तब भी चलेगा। एंड या नीचे लिखा हुआ अडल्ट वेट एवरेज वो 150 पाउंड मानते हैं। कितने मानते हैं? 150 पाउंड। किलो में कितना होगा करके बताइए कोई भी। कन्वर्ट 150 पाउंड टू केजी। अरे 150 को डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड करना है? 2.2 से। तो लगभग 70। तो हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं 70 किलो। ठीक है, हम भी कह देते हैं 50 से 55 से 70 के बीच में। पर हाइट भी देखनी पड़ती है, कुछ ज्यादा छोटा बंदा 80 किलो हो गया तो ज्यादा ही है। तो हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेट ऑफ चाइल्ड, केजी लिख लीजिए या फिर पाउंड से लिख लीजिए। नीचे अडल्ट का पाउंड में ऊपर लिखा है तो नीचे पाउंड 150 और अडल्ट डोज आपका ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 200 mg। सो ये कुछ फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और निकाले, ये भी एज की बात करता है। अगेन नॉट रिलायबल इन इंडियन सिनेरियो। इसमें भी वही करता है, चाइल्ड एज इन मंथ की बात कर रहा है। एवरेज अडल्ट वेट जैसे उसमें बताया 150 पाउंड इंडियन में हम कहते हैं लगभग 68 और 70 के बीच में, मल्टीप्लाई कर अडल्ट डोज। अब यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 24 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 80 mg, यानी बच्चे का डोज या चाइल्ड डोज 80 mg आ जाएगा जो भी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ओके। तो बॉडी सरफेस एरिया जिसकी बात की थी मैंने, वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज बॉडी सरफेस एरिया एज ए डोज कैलकुलेशन क्राइटेरिया फॉर कीमोथेरेपी एजेंट्स। कीमोथेरेपी अगर देनी है और कीमोथेरेपी की आप कोई सी भी दवाई उठा के देख लेना, यू विल गेट पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो में नहीं होगा, इतना mg पर केजी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां एक्यूरेसी की जरूरत है। ज्यादा दे दिया तो नॉर्मल सेल्स को मार देगा, कम दे दिया तो पूरी कैंसर सेल को नहीं मार पाएगा दैट कीमोथेरेपी एजेंट्स। सो यहां पर हम बात करते हैं अडल्ट डोज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी सरफेस एरिया। वहां स्टैंडर्डाइज कर दिया गोरे लोगों ने 1.73 मीटर स्क्वायर, यानी अडल्ट की बॉडी सरफेस एरिया। जैसे एक वेट की बात कर ली थी ना, अगर हमारे अकॉर्डिंग कहते 68 किलो केजी में और वो पाउंड की कहते 150, सो 68-70 किलो का नॉर्मल कहते हैं, तो वहां पर उसका बॉडी सरफेस एरिया निकाल लिया है 1.73 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कि डोज बच्चे का कैलकुलेट करना है आपको, तो क्या होगा बीएसए यानी बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.73 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, जो कि अडल्ट के लिए किया है। अब यहाँ नीचे देख लीजिए कि बच्चे का, इसमें लिख दिया है बच्चे का जो बीएमआई है, सॉरी बीएसए है, वो है 0.41। सो 0.41 डिवाइडेड बाय 1.73 मल्टीप्लाई बाय 250 लगभग आएगा 59.24। सो 59 mg of that particular medicine. That tells you the accurate dose for a baby or for any client in which you are using a body surface area as a criteria for dose calculation. Next please. अब बात आती है कैलकुलेशन को छोड़ो, यहाँ पर हम बड़े प्रैक्टिकल हो रही है। आपको हमेशा जब भी बोर्ड में जाते हो, पीडियाट्रिक बोर्ड में जाओगे तो आपको मिलेगा कि इतनी चीजें सब लिख लीजिए। आपने देखते होंगे वार्ड में तो दो दवाइयां आपने मेनली देखी होंगी, एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड मींस जेंटामाइसिन और अमीकासिन। देखिए सबने वाइट देखी है, कैसा पाउडर होता है, पीला या सफेद? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया मुझे। सफेद, देख लो सफेद पाउडर होता है। बेटा ये ध्यान रख लीजिए प्लीज, जाके देख लीजिए, अस्पताल में जाएं, अमीकासिन और जेंटामाइसिन ऑलवेज अवेलेबल इन दिस फॉर्म 2 ml। ध्यान रख लीजिए 2 ml में लिख लो, ये पाउडर में नहीं होता।
राइट। और हर बच्चा, साइलेंट प्लीज, हर बच्चे को एक या जेंटा लिखा होगा या अमीका लिखा होगा। तो जेंटा और अमीका लिख लीजिए। जेंटामाइसिन 5 mg लिखा है एक बच्चे के लिए, एक के लिए 10 लिखा है और एक के लिए 20 लिखा है। 20 mg 8 आर्मी चलता है, ये ज्यादातर 8 आर्मी है। लिख लीजिए, लिखा नहीं, पेन नहीं है क्या? जेंटामाइसिन डॉक्टर ने लिख दिया आपको कि एक बच्चे को 5 mg देना है नींबू में, एक बच्चे को 10 mg देना है और एक बच्चे को 20 mg देना है 8 आर्मी। ये कैलकुलेट कर दिया, ये करके भूल है ना, ये लिख के आ गया आपके पास। किसको देना है आपको? एक बच्चे को 20, एक को 10 और एक को 20। दूसरा लिख लीजिए, अगर जेंटामाइसिन की जगह अमीका लिखा होता तो उसमें लिखा है एक बच्चे को 20 mg देना है, एक को 60 देना है और एक को 100 देना है, 100 mg। अब मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ इन हैंड की बात कर रहा हूँ अभी। 500 में ही नहीं होता और में भी होता है। सो जेंटामाइसिन की बात करते हैं तो ये जनरली आपको वार्ड में देखने को मिलेगा। दुकान पे जाओगे मेडिकल की, मेडिकल दुकान पे जाके देख लो, जेंटामाइसिन दिखाना भाई, तो देख लो, कम से कम याद रहेगा। सो जेंटामाइसिन 80 mg in 2 ml लिख लीजिए, बिठा लीजिए दिल में, दिमाग में। जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड से लिखा होता है, इट मेनली एक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड 80 mg 2 ml। दूसरा अमीकासिन है, तो कई लोग अमीकासिन लिखते हैं, डिपेंड करता है फिजिशियन पर या डॉक्टर पर। अमीकासिन उसने लिखा है, ये भी 2 ml नहीं है और इज अवेलेबल इन 250 mg और 500 mg। 500, अगर अडल्ट की बात करते हैं तो 500 में जाइए, लेकिन बच्चों की बात करते हैं तो मेनली आपको 250 mg का लिखना है या 250 mg का ही लेके आना है। एंड मांगने पर, ये रिमोट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मांगने पर यू विल गेट 100 ml in 2 ml, sorry 100 mg in 2 ml also। एंड जेंटामाइसिन 60 mg in 2 ml मिल जाएगा, लेकिन मांगने से मिलेगा कि आप कहोगे कि मुझे बच्चे को देना है, then you will get also, but generally you will get 80 mg और वहां देख लीजिए 250 mg। ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है, कैलकुलेशन आ गई और सारा गड़बड़ा जाता है। अब लिख लीजिए 5 में बताता हूँ, तो हमारे पास तो है कि कोई पोर्टेबल बोर्ड होगा या मार्कर वाला, व्हाइट बोर्ड यहाँ लगा कर थोड़ा सा वहां पर प्रैक्टिस करने अच्छा हो जाएगा। सो 5 mg एक बच्चे को जेंटा चल रहा है, दूसरे को 10 mg चल रहा है, तीसरे को 20 mg। और अमीकासिन दूसरे बच्चे को अमीकासिन कितना बोला था मैंने? 20 mg, गुड। दूसरे को 60 और एक को 100। कैसे देंगे? इसके लिए फॉर्मूला है नंबर 1, लिख लीजिए फॉर्मूला नंबर 1, D डिवाइडेड बाय H मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू A। ये तो रटना है आपको। अगर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको वही हार्ड हो जाना चाहिए। लिख लीजिए D डिवाइडेड बाय H मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू A। अब मैं बात करता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। D का मतलब है डिजायर्ड डोज, जो डॉक्टर ने लिखा है। मैंने कहा था 5 mg, 10 mg और 20 mg, वो क्या हो गया? D हो गया। H क्या हो गया? स्ट्रेंथ इन हैंड, यानी आपके पास मैडम इधर से बोल रही थी 500 mg का अमीका है, एक 250 mg का भी, मैंने कहा 100 mg का भी, बट आपके हाथ में कौन सा है? 250 mg वाला, राइट। और बच्चे को कितना देना है? 20 देना है, 60 देना है, 100 देना है। कैलकुलेट करिए आप, इस पर डालिए। A का मतलब है, Q का मतलब क्वांटिटी, कितने ml में आपने डिसॉल्व किया है या ऑलरेडी डिसॉल्व अवेलेबल। तो मैंने कह दिया आपको अमीनोग्लाइकोसाइड हमेशा डिसॉल्व आता है या उसमें ही आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, 2 ml में आता है। तो यहाँ Q का मतलब 2 ml हो गया, राइट। सो स्ट्रेंथ इन हैंड 80 हो गया, वहां 250 हो गया, क्वांटिटी 2 हो गया, एंड अमाउंट टू बी विथड्रॉन फॉर इंजेक्शन। अब कितना आना है आगे दिखा दीजिए प्लीज। पहला वाला हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन, मोटी वाली बताइए मैंने अभी, नीचे वाले पे जाएंगे भी। आप देखिए पीडियाट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया जेंटामाइसिन 20 mg, मैंने 20 mg लास्ट वाला बताया, तो 5 भी बताया, 10 भी बताया, पर 20 से स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन। जेंटामाइसिन स्ट्रेंथ आपके हाथ में क्या है? 80 mg की है, 2 ml। अब आप देखिए D क्या है, लिख लीजिए, 10 है, 10 mg है। H क्या है? जो आपके हाथ में मैंने बता दिया था आपको अभी,
Q का मतलब 2 ml में। अब इसको डालोगे 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2 0.5 आ रहा है। सब करिए तो देखूंगा फिर एक का किसी का केजुलिया करके। सबका 0.5 आ रहा है नहीं आ रहा। किया ही नहीं कर नहीं रहे सीखना पड़ेगा अगर आप देख लीजिए 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ा सिंपल है। अरे यूज योर स्मार्टफोन और कुछ नहीं तो दिमाग नहीं है। 0.5 आ गया कि नहीं आया पहले मुझे बता दीजिए। आ गया ना ओके। अब आ जाइए कम वाले पे। कम वाले पे का मतलब आप 10 की जगह 5 है 5 कितना आया? कोई भी बोलिए उसको 5 नंबर ज्यादा देना मैडम इंटरव्यू में जो बता दिया। यहाँ मैंने आपको 20 का दिया ना सॉरी डी मैंने गलत लिखा है सॉरी ये मैंने 20 से बताया मेरे मतलब डी क्या है 20 है और एच क्या है 80 है और क्वांटिटी 2 ml है तो 0.5 आएगा। अब 10 से करिए 0.5 दिया है गलत है कितना आ रहा है 0.25 वेरी गुड so 0.25 ml can be given with the help of 2 cc syringe cc वर्ड यूज किया है ml 2 ml syringe से दे सकते हैं बच्चों को बोलने दो। हाँ 0.25 ml आया 10 mg देना है तो क्या 2 ml दिन से 0.25 दिया जा सकता है? नहीं आई समझ में? यस ml की सिरिंज से 0.25 नहीं दिया जा सकता। टू आस्क ट्यूबरकुलिन सिरिंज और राइट और आपके पास लखनऊ में बैठे हो या पता नहीं मिलेगी लखनऊ में बैठे हो तो यू विल गेट 1 cc syringe इंसुलिन और ट्यूबरकुलिन मिल जाएगी और विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन गिव 0.25 ml बट लग गया बट क्या लग गया आपको 1 cc syringe नहीं मिली रिमोट एरिया में आप पोस्टेड है पीएससी पर इस पर पोस्टेड है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर और वहां आपके पास 2 ml की syringe आपकी देनी तो पड़ेगी दवाई तो देनी है कुछ है क्या हाँ कोई भी आइडिया लगाओ यार इसलिए इस लड़के ने आइडिया लगा लिया कि भाई 0.25 है तो सर 1 cc सिरिंज मांगनी पड़ेगी और 1 cc सिरिंज से हम दे सकते हैं। मैंने कहा 1 cc सिरिंज है ही नहीं दुकान पे गए उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो 2 ml की है अब ये करें दवाई देनी है क्योंकि यू आर पोस्टेड देयर एंड बच्चे को 10 mg देना है 10 mg देने के लिए आपके पास 1 cc सिरिंज है नहीं तो क्या करोगे? इसका आंसर है मुझे लग रहा है कि आएगा मैं टाइम की बर्बाद नहीं करना चाहता कि मेरे पास नहीं करना हां कुछ आ रहा है आंसर यस क्या है ओए वेरी गुड आंसर ट्रिकी ओके वेरी गुड बोला तो सही कम से कम बोला तो सही नहीं बेटा ऐसा है कोई रूट चेंज नहीं करना डोज भी चेंज नहीं करना थोड़ा ज्यादा थोड़े कम में पे कर दिया यानी पतली के लिए लेकर के नहीं पहुंचना है आपको रास्ते से जाना है बट रास्ते से जाने के लिए आंसर इज डाइल्यूटर क्या है डाइल्यूटर। अब करना क्या है आप डाइल्यूशन आप देखिए कैसे करोगे तो फिर दूसरी सिस्टम है नहीं आपके पास वायल है 80 mg 2 ml तो आप क्या करिए दो बच्चों को सपोज 10 mg चल रहा है राइट सो एक बार एक मम्मी से ले लीजिए दूसरी बार दूसरी मम्मी से ले लीजिए सो करिए कि आप उस सिरिंज में से उस वायल में से 0.5 ml विड्रॉ कर लीजिए क्या कर लीजिए जो वायल है जेंटामाइसिन की 80 mg की
उसमें 2 ml की सिरिंज तो आपके पास है ना सबके पास, उसमें से 0.5 ml विड्रॉ कर लो, हो गया। एड 1.5 ml सैलाइन और डिस्टिल वाटर और उसको हिला के कैसे कर दीजिए, ये नहीं वो पानी पानी आगे रह जाए और दवाई नीचे रह जाए, तो उसको क्या ऐसे कर दीजिए। अब क्या बन गया आपके पास 2 ml इज इक्वल टू 20, यही हुआ ना, क्योंकि 80 mg कितने में था, 2 ml में था, 1 ml में कितना हो गया 40, मैंने कहा 0.5 विड्रॉ करना है तो 20 ml उस 0.5 में था, आपने उसको 1.5 ml सैलाइन या डिस्टिल वाटर मिला करके कितना बना लिया 2 ml बना लिया। अब 2 ml इज इक्वल टू 20 हो गया। अब मैंने कहा था कि बच्चे को कितना देना है 10 देना है, 10 देना है ना, 2 ml में 20 है तो 1 ml दे दीजिए, और एक बार एक मम्मी से ले लीजिए, दूसरी बार तो ये भी नहीं तो वो खराब हो जाएगा, राइट, दूसरी बार दूसरे वाले से ले लीजिए, तो 10 mg लग जाएगा। और अगर बच्चे को 5 mg लिखा हुआ है न्यूनेटोलॉजी में, न्यूनेट है बच्चा 5 mg है तो 2 ml is equal to 20, so 0.5 is equal to 5 हो गया ना, नहीं गड़बड़ लग रहा है, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ बेटा। 0.5 आपने विड्रॉ कर लिया, उसको 2 ml बना लिया, सो 2 ml में कितना 20 हो गया, 1 ml में 10 हो गया, तो 1 ml में 10 हो गया और 0.5 में 5, तो 5 mg भी दे सकते हो, 10 mg भी दे सकते हो, तो 20 हो गया। सो डाइल्यूशन इज आंसर इफ यू आर नॉट हैविंग 1 cc syringe, राइट। अब जेटा उसकी बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका से ये हमेशा जब मैं बोल रहा हूं ना में लिखे होते हैं, सारे बच्चों को देने होते हैं। अमेरिका से कितना था 20 डिवाइडेड बाय 25 2000 सॉरी 250 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है, कर दीजिए मोबाइल से कर दो यार, आप भी हेल्प करो, कितना आया, चलो एक 100 वाला 100 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2, एक है मैंने 60 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना कितना आया तीनों का, कौन सा बोल रहे हो, 0.8, तो 2 cc से दे सकते हैं इतना, तो 2 ml की सिरिंज से 1.1 की बात आ रही है ना, नहीं गड़बड़, मैडम आप पहले करो, क्या किया किसने किया 100 वाला बताओ किसने किया, कितना सिंपल है बेटा, देखो मैंने पहला बताया था 20 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसमें डालो अपना बता देगा, दूसरे में बताया था 60 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2, यस 0.8, सो 0.8 की हेल्प ऑफ, अब बताइए 40 60 और 20 का बताइए, 60 और 20 का कितना हुआ, तो बड़ा मुश्किल है, अगेन यू हैव टू गो फॉर 1 cc syringe, और 1 cc syringe मिली तो डाइल्यूशन, राइट, समझ में आ गया, ओके। लेट्स कम टू द नंबर 2, दूसरा ऐसा दवाई जो लिखी जाती है, नेक्स्ट प्लीज, बोले इससे पहले दूसरी दवाई है आपने देखे होंगे सेफ्ट्रियाक्सोन, जिसको सेफेलोस्पोरिन बोलते हैं, एक अमीका जेंटा लिखा होता है, दूसरा सेफेलोस्पोरिन सेफ्ट्रियाक्सोन, तो इसमें क्या कर रहा है डॉक्टर ने कितना बोला है 250 mg 12 आरली, उसमें मैंने डाल लिखा था, इसमें 12 आरली लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ रेंज कितनी है 1 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम 1000, राइट, सो आपने इसको 10 ml डेक्सोज में या डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लिया, कितने में, अरे बोला करो 10 ml, गुड, सो 10 ml में आपने डिसॉल्व कर लिया, 1 ml कंटेनिंग हाउ मच ml सॉरी मिलीग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 ग्राम था 1000 मिलीग्राम हो गए, 10 ml में आपने डिसॉल्व कर लिया,
सो 1 ml में कितने होंगे mg? 100 mg. गुड. सो 1 ml containing 100 mg. आपको लिख देना है. तो अगले वाला आएगा उसे पता है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? 1 ml is equal to 100 mg. जिसे दूसरा वाला है तो वो 100 mg लिखा हुआ है, 200 mg लिखा हुआ है, तो वो उतना डोज दे सकते हैं. राइट. सो यहाँ आप देख रहे हैं D क्या है? 250 है. H क्या 1 ग्राम है. क्वांटिटी आपने 10 ml में इसको डिसॉल्व कर लिया. अब आप देखेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 2.5 ml. तो 2 ml की सीरीज से आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ मैं कहता कि बच्चे को हमें 100 mg देना है, 100 mg, आपको 1 ml दे देना है कि नहीं? 1 ml is equal to 100 mg. तो 10 में आपने किया है. अगर बच्चे को 200 mg देना था तो आप 5 ml जब देते तो 1 ml दे देते. 10 में किया इसलिए 2 ml देना पड़ेगा. राइट. ओके, नेक्स्ट प्लीज. अब बात आती है थोड़ी सी फ्लूइड की. दवाई तो दे दी, बड़ी टाइम 5-10 मिनट लूंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम इसमें भी चलना मुश्किल हो जाती है. ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड मेजर प्रॉब्लम. अभी अनुग्रह बता के गई है कि आईवी फ्लूइड, आईवी थेरेपी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया, फ्लूइड आपको देना है. कौन सा देना है? पहले तो देखना है कौन सा देना है डिहाइड्रेशन में. सो पहले तो ये 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, ये समझ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं. वो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और कॉलोइड. राइट. सुनिए, ये थोड़ा बोलो यार, मुझे भी हौसला रहेगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा. सो आइसोटोनिक मींस सिमिलर टू आवर बॉडी फ्लूइड. ऑस्मोलरिटी कितनी है? सिमिलर है हमारी बॉडी. हाइपो मींस कम है, हाइपर की सबसे ज्यादा है. कॉलोइड मेनली प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं, जिनको कहते हैं में से एक्स्ट्रा. राइट. नेक्स्ट प्लीज. अब आप देखिए, ये पहली लाइन पढ़ लीजिए. दिख रहा है सबको? जब मैं पढ़ देता हूं. 0.9% नॉर्मल सैलाइन. सैलाइन होती है वो आइसोटोनिक है फॉर अडल्ट, बट नॉट फॉर इन्फेंट्स. ये दिमाग में रख लीजिए. 0.9% सैलाइन बच्चों के लिए आइसोटोनिक नहीं है, हाइपरटोनिक है. अगर इसको आइसोटोनिक बनाना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूबॉर्न. नीचे से स्टार्ट करा, मैंने स्टार्ट न्यूबॉर्न से किया था, एडल्ट तक गया. सो अगर हम न्यूबॉर्न बच्चे की बात करते हैं, खाया मैंने बड़ा हाइपरटोनिक और न्यूबॉर्न बेबी, ओनली 0.2% सैलाइन इज आइसोटोनिक फॉर न्यूबॉर्न. 0.2%, यानी 0.9 नहीं, उसको कितना करना पड़ेगा आपको? और आपने देखा होगा जब बच्चे को कुछ चढ़ रहा होगा, उसमें लिखा होता है आइसोलाइट पी, लिखा होता है. देखी होगी ना बोतल, आइसोलाइट पी, पी मींस पीडियाट्रिक्स, आइसोलाइट पी. उसमें आप उठा के देखोगे ना तो यू विल गेट सैलाइन 0.2%, है ना? 0.9 वाला नहीं देना है. राइट. सो अगर हम बात करते हैं, देखो 6 महीने तक बच्चे को NY5 और NY4 देते हैं. NY5 का मतलब है लगभग 2% सैलाइन. असली में तो 0.18 है, बट हम राउंड फिगर में लिख देते हैं 0.2% सैलाइन NY5. राइट. NY4 का मतलब है 0.225% सैलाइन. ये n को डिवाइड बाय 4 कर दो, n का मतलब 0.9 डिवाइडेड बाय 4, 0.225 आएगा. ये आ रहा है, देख लीजिए करके. देन NY3 की बात करते हैं. 6 महीने से ऊपर का हो गया तो हम NY3 पे आ जाते हैं, यानी सैलाइन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं. और इसमें क्या करेंगे अपन? 0.33% सैलाइन हो जाएगा, 0.33. एंड NY2 में 0.45 है, 50-50, 0.45. और जैसे ही 6 साल के ऊपर जाएगा बच्चा, हम नॉर्मल सैलाइन पाए जाते हैं, या 0.9% सैलाइन का घोल या सॉल्यूशन बच्चे को देते हैं, उसे पहले नहीं देते. अब पहली बात तो ये कि रेडीमेड सारी चीज रेडीमेड अवेलेबल है, बट समटाइम्स इफ रेडीमेड इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट टू डू? जैसे मैंने कहा तो 1 ml की सीरीज नहीं मिली, फिर क्या करें? अगर यहाँ पर फ्लूइड नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे? ये टाइट्रेशन है. केमिस्ट्री की टाइट्रेशन याद आ रही होगी आपको, प्लस 2 में पढ़े होंगे ना, कुछ मिलाते हैं ना इधर से. तो इसमें क्या करना है आपको? 2 बोतल चाहिए, एक सैलाइन की बोतल चाहिए, और डेस्टोज 5% और 10%. डॉक्टर ने आपको बोला है कि प्रिपेयर NY5 in 5% डेस्टोज और 10%. 10 का तो 10% की ले लीजिए बोतल, और नॉर्मल सैलाइन की ले लीजिए. क्या करना है? NY5 में 1 पोर्शन सैलाइन और 4 पोर्शन डेस्टोज.
सो 100 ml सैलाइन और 400 ml ग्लूकोज, 5% और 10%, राइट। ऐसे ही अगर NY4 में जाना है तो 1 पार्ट 3 पार्ट, यानी 1 पार्ट सैलाइन का लेगा, 3 पार्ट डेक्सट्रोज की लेंगे। अगर 3 की बात करते हैं NY3 की 3 की तो 1 पार्ट 2 पार्ट, और NY2 की कहते हैं 50-50, आधा आधा, राइट। सो अगर इसको यहां देखें कि 500 ml की आपकी नॉर्मल सैलाइन की बोतल है और 500 ml का डेक्सट्रोज की बोतल है, अब आपको ट्रांजिशन करनी है NY5 बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड करिए, 100 हो गया, एक पार्ट हो गया 100 ml डेक्सट्रोज की बोतल में से निकाल देना, 100 ml सैलाइन मिला देनी है, क्या बन गया, NY5 बन गया। अब यहां देखिए NY4 में 500 को 4 से डिवाइड करो 125, अब 125 ग्लूकोज निकालना है और 125 सैलाइन बन गया कोई 4। NY3 में NY3 500 को 3 से डिवाइड करो, एक पार्ट कितना आया 162 विद 167 ग्लूकोज निकालो और 167 सैलाइन मिला दो, NY3 बन गया। और यहां तो 50-50 है, ब्रिटानिया 50-50, आधा सैलाइन और आधा ग्लूकोज, राइट। सो अगर अवेलेबल नहीं है रेडीमेड तो आपको ये बनाना आना चाहिए, किताबों में नहीं मिलता है, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब आती है आपको फ्लूइड का पता है, तो कौन सा फ्लूइड, छोटा बच्चा NY5, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नॉर्मल सैलाइन किया जाए। अब है कितना देना है, तो ये फार्मूला है, अगेन बहुत सारे फार्मूला हो गए ना, इंडाइजेशन हो जाना है। तो ये 3 फार्मूले में रट लीजिए, ये किताबों में नहीं मिलते। पहला फार्मूला है 100 ml पर केजी पर डे, पहले 10 किलो के लिए। अगर बच्चे का वजन 10 किलो से नीचे है तो मैं कहूंगा कि 100 ml 1 किलो के लिए, लाइक 3 किलो का बच्चा पैदा होता है ना, कितना फ्रूट चाहिए 24 घंटे में उसको, 300 ml, बड़ा सिंपल सा है ना, फार्मूला नंबर 1 लगाना है उसमें, है ना, ये ध्यान रख लेना, ये सारे फार्मूला लगेंगे। तो 4 किलो का है तो 400 ml, 9 किलो का तो 900 ml, 10 किलो का है तो 1 लीटर यानी 1000 ml, क्लियर। अब मैं कहता हूं फार्मूला नंबर 2, 50 ml पर केजी पर डे, नेक्स्ट 10 केजी, नेक्स्ट 10 केजी का मतलब 10 से 20, राइट, और 20 ml पर केजी पर डे 20 केजी ऑनवर्ड्स, राइट। अब ये तीनों फार्मूला ध्यान रखने हैं अपने आप को लिख लेंगे। नेक्स्ट प्लीज, ओके आ गया। देखिए फार्मूला नंबर 1 पहले में लगाया है मैंने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड फॉर बेबी 7 केजी, 7 किलो वजन है, बड़ा क्लियर सा था, फार्मूला 1 लगेगा, कितना हो गया 700 ml, बस 24 घंटे में 700 ml देना है आपको। अब फार्मूला एग्जांपल नंबर 2 एक कहता है कि बच्चे का वजन 16 किलो है, कितना है 16, तो पहले 10 किलो के लिए जोड़ लीजिए, पहले 1000, ये देखो मैंने बताया ना नीचे 10 × 100, और आगे कितना 6 × 50, फार्मूला नंबर 2। अब इसको टोटल कर लीजिए 1000 + 300, तो 1300 ml 24 आवर्स आपको देना पड़ेगा अगर बच्चे का वजन 16 किलो है। अब आप देख लीजिए सिनेरियो नंबर 3, बच्चे का वजन 24 किलो है, अब फार्मूला तीसरा भी आ गया, पहले 10 किलो के लिए 1000, दूसरे 10 किलो के लिए 500, नेक्स्ट 10 किलो के लिए, या 10 किलो नहीं उससे ऊपर 20 वाला था ना, तो उसका 20 ml था, तो कितना 4 है, 4 किलो है, 4 × 20 80 हो गया, तो कितना हो गया 1580 ml 24 आवर्स। अब सब क्या करिए, इंक्लूडिंग मैडम्स, अपना वजन लिखें और खुद के लिए कैलकुलेट करें, तीनों फार्मूला लगा करके, मैं देखूंगा, समझ गए ना। अपना वजन पता है सबको, अपना वजन लिखो और इससे पता लगेगा कि आपको 24 आवर्स में कितना पानी पीना है, उससे कम नहीं पीना, नहीं तो पथरी बन जाएगी। खुद का वजन बच्चों के लिए निकाल दो कि 24 का है, बच्चा 24 किलो का है तो उसको 1580। अब अपना देख लीजिए खुद का वजन, वो तीनों फॉर्मूला दिखा दो, उनको पीछे वाले क्या होगा, एक बार पीछे वाले और पीछे, ये फॉर्मूला आपके सामने करिए कैलकुलेट अपने लिए, खुद के लिए। फटाफट करिए, बड़ा सिंपल सा है, खुद का वजन सबको पता है, तीनों फॉर्मूला लगाइए और बता दीजिए कितने ml इन 24 आवर्स आपको पानी पीना है। नहीं पियोगे तो फिर हमें आईडी चढ़ा देंगे।
देखो ये एक्सीलेंट। सो ये इसमें नॉर्मल कंडीशंस में है। अगर आपको धूप में खा रही है तो आपको फिर ज्यादा पीना पड़ेगा, और अगर ग्लूकोज हो गई, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गई तो फिर ज्यादा पीना पड़ेगा, है ना? ओके, हाँ नीचे से सारे करिए यार प्लीज, आगे पता कितना बजट है? बजट कितना है? 70 है ना? तो पहले 10 पहला फॉर्मूला दिख रहा है 100 ml। शुरू ऐसे नहीं करते हैं, तीनों फॉर्मूला लगेंगे। पहले 10 किलो के लिए तेरा 1000 हो गया, पहला फॉर्मूला लग गया। मैंने कहा ना पहले 10 किलो के लिए, नहीं 10 किलो के लिए दूसरा फॉर्मूला 500, है ना? याद करना बेटा, ये ऐसे 100 into 10 कितना हो गया? 1000 हो गया। दूसरा 10 into 50, दूसरा फॉर्मूला दिखा है 50 है, 500 हो गया। आगे का 20 माइनस कर देते हैं, कितना 70 में से 20 माइनस कर 50 हो गया, तो 50 into 20 कितना आया? इधर आया ना? अब कितना हो गया? तेरे को 2.5 लीटर पानी पीना है, 2.5 लीटर हो गया ना, 2500 ml। और किसी ने निकाला? अरे समझ में आई कि नहीं? क्या सोच रहा है? बहुत गहरी नहीं आई। कितना बचा है? 60 ये है और 60 में से 20 तो 20 माइनस से 40 हो गया, 40 में से 3 ऐसा हो गया, 1100 और 1000 पानी पीना नहीं आ रहा, ये हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है? उनको बजट पता है? थोड़ा कम कर इसको, आया कि नहीं आया? अब प्रैक्टिस करना जब आएगा, इतनी देर में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। आगे चलो प्लीज। ओके, अब आता है, आपको पता लग गया कितना फ्लूइड देना है, अब वो है कैसे देना है। जैसे मेडिसिन की बात की थी ना, कौन सी दवाई कितनी कैसे देनी है, ऐसे ही अगर फ्लूइड की बात करें, मैं ये फॉर्मूला है, याद रखिए, फॉर्मूला तो ज्यादा ही हो गया ना। टोटल अमाउंट टू बी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। ड्रॉप फैक्टर माइक्रोमीटर से यूज करना है आपको, 60 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml, राइट? अब एग्जांपल मैंने कहा है 700 ml NY4 डेक्सोज देना है 24 आवर्स में। फ्लो रेट कितनी होगी? 700 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स कह रहा हूं, उसकी मिनट्स बनानी है 24 into 60। लिख लिया? मैं आ रहा हूं, देखता हूं, बताता हूं आपको। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। 700 ml 24 घंटे में देना है। आपको माइक्रो डिपसेट आपके पास होना चाहिए। माइक्रो डिपसेट छोटी ड्रॉप पकती है ना, उसमें 60 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml होता है। सो 700 into 6 60 डिवाइडेड बाय 24 into 60, 60 से 60 गया, 24 से डिवाइड कर दो 700 को, कितनी ड्रॉप्स आई? जो मैंने लिखी होंगी उतनी आएगी। कितनी आई? कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी ना, पॉइंट में होगी, मैंने उसको राउंड फिगर कर दिया होगा। यही है बच्चों, कितनी आई? यार क्या करते हो तुम लोग? तुम्हारे कंधों में पूरी यूपी का भार है, मरवाओगे यूपी वालों को।
अरे 700 को 24 से डिवाइड कर दो, बड़ा सिंपल सा, उसमें कुछ आएगी, कितनी आएगी देख कितनी सही बता दो पूरा, थोड़ा दो डॉक्यूमेंट में लिख दिया 29 पॉइंट्स, तो 29.16 ड्रॉप बनती नहीं है, 0.5 से ज्यादा होता तो उसको 30 कर देते, और 16 है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको 29 ड्रॉप पर मिनट यू हैव टू रेगुलेट टू गिव टू इन्फ्यूज 700 ml in 24 hours। समझ में आई? आ जाएगी आगे, फिर बुला लेना मुझे, आ जाऊंगा आगे चलो। ओके ये पहले एक और है लास्ट, ये देखो एक और है प्रॉब्लम 300 ml 24 घंटे, वहां 700 ml थी, यहाँ क्या है 300 ml, बच्चे का वजन 3 किलो है, उसी को उसको 300 ml लेनी थी ना, तो 300 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 24 इनटू 60, 60 से 60 चला गया, 24 को डिवाइड कर दो, 24 से 300 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या आया, तुम्हें लिखा है वही आया कि कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है 12.5, सो मैंने इसको 13 कर दिया, 0.5 आधी ड्रॉप में बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा इसको 13 कर देते हैं, तब चल जाएगा, ठीक है। बट अब देख लीजिए मैं नीचे एक लाइन लिखी है, इफ ड्रॉप रेट इज लेस देन 20 ड्रॉप्स पर मिनट, आपकी कैलकुलेशन 20 ड्रॉप से कम आ रही है, तो देखिए आप ड्रॉपा नहीं टपका सकते, यानी 1 मिनट में 20 ड्रॉप या 13 ड्रॉप टपकाना इजी जॉब नहीं है, और टपका के सो गए हुआ एकदम चला गया जगह थोड़ी सारा खत्म हो गया, बच्चे की हालत ओवरलोड हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। सो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम बिल्कुल नहीं देना, इसलिए यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव, जैसे वहां डाइल्यूशन की बात की थी ना, या कहो भैया इन्फ्यूजन पंप लाइए मैडम जी, ऐसे दी जाएगा इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप दिखाऊंगा तो लगा करके रेगुलेट कर देते हैं, राइट, देखा है ना, देख लेना। सो 20 ml 20 ड्रॉप से कम ड्रॉप आ रही है आपकी कैलकुलेशन, तो कोशिश मत करना, आप कहना ये डोपा नहीं टपकेंगे, मुझे इन्फ्यूजन पंप चाहिए या सिरिंज पंप चाहिए, उसमें आप रेकमेंड कर दीजिए 13 ml पर आवर या 20 ml पर आवर, 20 ml पर आवर मींस 20 ड्रॉप्स पर मिनट, क्लियर? ओके, लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं, ये कुछ मैसेजेस हैं, बड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन से, वैसे दिमाग का नहीं बन जाता है, मैं बना दिया मैंने आपका आता था, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने खुद ने लिख दिया कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चों की बस एकदम से सीखना। एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोजेज फूड एडमिनिस्ट्रेशन एसेंशियल फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, ये समझने की बहुत जरूरी है। देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड केयरफुली कंसीडर द चाइल्ड्स एज, वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया, मैं कह रहा हूं एज पे विश्वास मत करिए, उम्र है उनकी, मैं वैसे कह रहा हूं कि उम्र पे विश्वास मत करिए, ओके। सो हेपेटिक फंक्शंस एंड दे शुड बी केयरफुल मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना चाइल्ड, एनी एडवर्स रिएक्शन, मेडिकेशन एंड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली प्रॉब्लम फ्लूइड ओवरलोड। नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू फॉर पेशेंस। अगर बेटा भी कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत मैं अभी अवेलेबल हूँ, आपको 2 मिनट में पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, कोई भी डाउट। ये मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत सारे मास्टरों को पसंद नहीं होते क्वेश्चन पूछने वाले, पर आई लाइक स्टूडेंट हु इज आस्किंग क्वेश्चन। इडियट जो थे ना, 3 इडियट थे ना, रिजल्ट को मैंने दी, वो वायरस था ना, वो डालने के लिए सोचता था ना, मुझे अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब आई एम फेल, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं समझा पाया, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है इसका मतलब मैं कुछ गाने में सक्सीड किया या कुछ मैंने आपको जगाया, मैं नहीं कहता मेरी जो टॉक है वो 100% लोगों को सिखा दिया, मैं कह रहा हूँ मेरी टॉक ने आपको 30 से 40%
सेंसिटाइज किया होगा, बट नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन। जादूगर बनना है, प्रैक्टिस कर, हाँ, जादूगर बन जाओगे, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलस सीख जाओगे, कट जाएगी आपको, बाई हार्ट हो जाएंगी, बच्चे भी सोचेंगे मैडम को सब पता है। So okay, अगर there is no question, thank you. And thank you once again for organizer to give me opportunity to interact with the Bhavi nurses. हिंदी है ना, अब मैं सीख रहा हूँ हिंदी, यूपी में आकर के बच्चों से हिंदी सीख रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैं पैदा हिंदी भाषी स्टेट में हुआ हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। 7 साल राजस्थान में काम किया, 10 साल एम्स न्यू दिल्ली में काम किया, and 17 years I worked in Punjab Medical University and now I am in ERA. तो इसमें ज़्यादा टिकता नहीं हूँ एक जगह पर, 17 साल टिक गया वहाँ। एंड अभी मेरा बच्चा एक्चुअली क्या एम्स लाइब्रेरी आ गया है, तो मैं उसके चक्कर में यूपी आ गया और आप जैसे ब्रिलियंट लोगों से मुलाकात हो गई, जानकारी हो गई। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such a brainstorming and awareness session. Next, I would like to invite on stage Dr. Anuradha ma'am and Dr. Ritu Singh ma'am to honor the sir with the momentum. Ma'am, you are cordially invited on the stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Mrs. Jasmine Sinha ma'am to welcome Professor Jagdish Singh sir, Principal and Right the International Institute of Medical Sciences, Lucknow. We welcome you, sir, with floral bouquet. Ma'am and sir, you are accordingly invited on the stage. As the current students maintain the decorum of the auditorium. Request to Professor Jagdish B. Sir, Principal and Right International Institute of Medical Sciences, Lucknow, to impart his knowledge on instrumental ways to predict developmental delay. So you are cordially invited. Students, make silence. Good evening, all of you. It is my pleasure standing in front of you. And I thank Madam Jasmine for giving me this opportunity to stand in front of you and deliver the session of mine. I had witnessed
the wonderful work and efforts you all have taken to organize this 2 days national level workshop right from the entry of this campus. It was very beautifully planned and executed, so I congratulate the team members for your effort. So without any further delay, let me go on to the question. I bring greetings from my institute, Anchorite International Institute of Medical Sciences, Lucknow. So when we see this, the growth, it begins from the inception. It begins from the inception, from the embryo, it converts into the fetus, then the newborn, and we grow, mature, and die. So this is how we have the progress of growth. So it starts right from the inception and it carries till the death. So before I enter into my session, already sir has activated my crowd. So I was really worried how am I going to tackle the students post-lunch session. But sir, you have made the session very easy. All are very lively. But still, I want the students to rise up. Please stand up. And I would expect you all to follow my command. You're there? You're following my command? Yes, sir. Yes. When I say right, turn to your left. And when I say left, turn to your right. Only your head. Okay? I say right. Those who do mistake, you say way yourself. I say right, left, left again, right. I can see mistake there. Right, left, left and right. No? So you are not going to listen to me. Okay, please sit. And this is what we are going to talk about. We are going to talk about the development. So we are going to define the growth and development from the dictionary of Oxford, where the growth is defined as an irreversible, constant increase in size. The growth is just becoming big. मैं बड़ा हो गया, सिर्फ मैं बड़े हैं, but मेरे से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. इसका मतलब it is of no use. Only if I am grown, along with my growth, I should have development. What do you mean by development? It is defined as the psychomotor growth. So it is the capacity which we attain. The psychomotor capacity which we attain is the development. And that is what you all have done now. You have perceived the command, that is the psychology. Your brain has perceived the command and it has reflected in the motor activity. When I say all rise up, you should have. And when I say right, you turn to your left. That means you have understood the command and you are following it. So your brain and the motor activity both are in coordination. If there is a failure in coordination or if there is a delay in this, then we call this as a delayed developmental disorder. So it may be a wrong in coordination, or sometimes this may not work, or the motor activity may be delayed. So collectively we call this as the developmental disorder. Developmental milestone, it refers to some indicators. We take reference of certain things and based on that we select whether they grow in order or not. So there is a milestone which we determine after this we are not supposed to cross the limit. So as sir was saying, age for drug calculation, but we have to follow this strict rule of considering age as a factor
for developmental disorders. Next slide. So why is it required? And what are these? I know yesterday in the session you have meant to have a detailed discussion about milestone development, so I'm not going into the depth of it, but I just wanted to overview of different stages of children. Have you ever seen a child? Infant को देखा? क्या करते हैं? What does the infant do? What does the infant do? It sings song. गाने गाते हैं? Yes. Smile. Okay. Cry. But I take the smile. You look at the cry. Okay. So it is in reciprocation to some kind of stimulus. Okay. So what is that? At 1 year of age, it will try to learn, and it is manipulating his own body to react to the immediate environment. Immediate environment को react करने के लिए वो अपने आप तैयार करते हैं. It is preparing itself or manipulating the body to prepare itself. So how does it do? That is how we are trying to hold an object, trying to crawl, trying to read, roll over. All this happens in the first year of the life. That means I wanted to progress. I want to manipulate my body for the immediate environment which is surrounding me. If something is there nearby, I want to catch it. So there is the grasping. Again, if something is there, I wanted to hold. And I wanted to lift my body. So trying to lift, turning around, all these things are happening because of the stimuli. What is the stimuli? It is this: I am looking at something, and I want to reach that. Right? We go to the next toddler stage group. They wanted to move on. Ready, steady, and run. Once they become steady, they immediately wanted to run. They don't want to walk. So that is what the toddler age group does. Next slide. As a preschooler, here comes the cognition. The cognition and communication skills will be developed. बहुत बोलते हैं. I do have small kids, he talks so much. So that means once they go into the school, they learn relationship, they learn to communicate each other, and they have the cognitive development. How to write A, there is a development. How to hold a pencil, there is a development. What is a modulation of writing, there is a development. So this development is the cognitive development. And the school-going children will have the period where they develop the academic and social skills. What are these academic and social skills? They wanted to explore more and find out what is their interest. And they come into the social skills, making enemies and friends. They say, no, I don't have this group. They make their own groups. That becomes the peer group formation or socialization. They have their own willingness. किससे वे बात करें, किससे बात नहीं करें. So they decide that they flock with their own groups. Right? And the adolescent age. In this adolescent age, there is lots of emotional changes happening. So what are these emotional changes happening here? It requires a careful monitoring and a careful guidance. Because this age is that the emotional changes may have a disturbances. Right? It may wanted to go into any kind of profession. Then they will decide which profession I will have to go. They have you are here. So emotional connect which you have between your past or with whatever you have heard. That is how you might have come into this field today. So all these things are contributing for the overall growth and development of the children right from infant till the adolescent age. When I speak about the incidence of this,
delayed developmental disorder. Worldwide, according to the UNICEF in 2019, an estimated 317 million children are having this kind of disorder. In this, it is highly alarming. Around 1.5 crore are from India. It is a very huge rate, and go back. It is a very huge rate where India is having 1.5 crore people, children having affected by this developmental disorder. When you see the developmental delay, it is a condition where a child is delayed attaining age-appropriate milestone in specific domain. So in certain domains, we have to attain this. There is a limitation of a milestone attainment, and we have to attain this within the specific age group. If it is going beyond, then we name that as the delayed developmental milestone. So I spoke about attaining this within certain domains. What are the domains? We know it very well. It is gross motor and the fine motor domain. We have the speech and language. We have the cognitive domain. We also have the social and personal domain, and also the day-to-day activities of the children. When we see the motor delays, what are the motor delays? It is the ability of the child to coordinate with the large muscles. The large muscles will have a coordination to stand up, to raise your hand, to walk, to run, to sit. So all these things are involved large muscles of the body. So for this, it starts from the infant. So this infant side, how will we identify? You can see a normal development where there is a holding of the neck. If the head is not held properly, it is lagging behind. So the lagging of the head behind is an indication of poor developmental disorder in your early infant stages. You can again see another kind of motor development disorder where the walking, you can see the two different types of walking over there. One, a casual walk, and another, a lethargic walk. So this will be another indicator for your motor disorder. Some children have disturbances in sitting or getting up. When we see getting up is not spontaneous, that means it is an indication of some kind of motor disorder. The child is not able to get up. It of course stands up, but look at the posture the child is using. It is not able to get up independently without help or support. So this kind of thing is an early alarm for us or trigger for us to identify there is some kind of motor developmental disorder for this age group. And you can see the walk of the child again. In later stages, the less than 2 years old, if the child is walking typically like this, then again there is an indication of motor disturbances. Are you clear? The basic motor disturbances right from the infancy, let it be holding of the head, or let it be walking, or let it be getting up, or another posture of walking. So all these things are clear indicator of developmental disorders related to the motor domain. Right? The speech and language delays. Speech and language delays, it has got some interesting facts which I'll come to later. But here, it is forming of the words. Many of them will struggle in forming a word. Okay? So they may make a different sound when they pronounce. The pronunciation may not be proper. So all these things may be because of the language disorder. So technically, we call this as dyslexia. This difficulty in language.
So sometimes they may not have vocabulary to speak. You can see this most common. The children may call only mama, dada, but they only speak few words repeated. Right? The cognitive delays here, it is the intellectual interfering with the awareness and causing learning difficulties. Student silent. Children with cognitive delays may also have difficulty in communicating and playing with others. So that means the social withdrawal happens here when there is a when there is a cognitive delay. So what happens in the cognitive delay? First, there is a learning disability. Then next, there is a communication error or there is a communication difficulty. And obviously, when I am not able to interact with the group, I will withdraw myself from the society. That results in withdrawal from playing also. So I will not be able to have a normal play, I will not be able to communicate properly, and that reflects in the learning of my school. Next. Social, emotional, and behavioral delays. So what are the social and behavioral delays? So already we have discussed about this. Here, due to the differences in the brain development, what happened? The information or what kind of reactions they give to the environment is different. Stimuli एक ही है, उस stimuli को किस तरीके से आप respond करते हो, वो अलग-अलग होगा. If anybody has an headache, आप क्या करते हो? अगर सर दर्द हो, you decide your own choice of treatment. I will go and sleep nicely. अगर मुझे headache हो गया, मैं सो जाऊँ. So somebody will have apply the pain bath, or you may be having a tablet or whatever. So here there is a difference in approaching same kind of thing, social and emotional, one setting but different kind of solutions. And there are certain red flags recommended by the Indian Academy of Pediatrics, which should never be ignored. As per the domain, will go. First, in the gross motor, it is holding of the head by 4 minutes. अगर 4 महीने में holding of the neck नहीं हुए, if there is a lagging, then you will have to pay attention that there is definitely a common milestone disorder or developmental disorder. Then, if there is no rollover found after 6 months, 6 महीने के बाद अगर rollover नहीं हुआ, that is also a red flag sign. Sit without support in 9 months. If there is a failure to sit without support and the children is failing to stand without support and it is not walking along in 15 months or balancing and running within 36 months, that is in 3 years. So all these things are a red flag alert given by the Indian Academy of Pediatrics. So we all should be very carefully monitoring this. Then the fine motor development comes here. Mature grasp. So how you can hold it tightly. If it is not there beyond 12 months, that is after 1 year, then that is an alarming sign. Then manipulate large objects. So try to push or move according to the will of the children. If it is not happening after 1 year, then again there is a cutoff of the developmental milestone. Then self-dressing by 3 years, using crayons and scissors and buttoning in 4 years and 5 years respectively. Right? So you can see the next domain, the speech, where a babbling sound should be there by 12 months. If there is no kind of sound made, even after 1 year, then it is very alarming. The gestures have to be closely monitored how they are creating the gestures as how we look at in the APGAR score itself. Then at least 2 words are not said by the end of 24 months, that is by 2 years, then the child is really having some kind of speech disorder.
And the hearing response to any sound or response to the command at any age is alarming. Right? Vision. The play with own hands. The children used to take up the toys close to them and they start playing by themselves. And if it is not happening within the 3 months of age, then we can identify there is some type of vision disability. They have to follow the object, and this is the clear indication. Otherwise, the infant, it is very difficult as a parent to identify the vision of the child. The child has to follow the colors, the bright colors should be followed by the child. Then maintain eye contact, especially during the breastfeeding. The mothers can easily identify whether the child is maintaining the eye contact or not. Motor delay, clumsiness, and stumbling at any age is a strong trigger for delayed developmental milestone. What do you think is the risk factors? Risk factors of this developmental disorder. It is mainly the three things, which is prenatal, intranatal, and the postnatal. So collectively may result to developmental disorder. In the antenatal period, if there is a pregnancy-induced hypertension, then there are a risk for the developmental disorder. Likewise, pre-eclamptic toxemia, there is a gestational diabetes, anemia, diminished fetal movement, maternal infections, mental worries of the mother, and genetic problems. So these are the antenatal risk factors which may result in the developmental disorder post-birth. The natal problems, it begins with the labor. Prolonged labor may result in poor cognitive domains. Then the meconium-stained amniotic fluid, which is an indication of aspiration of meconium fluid, and that results in respiratory distress. The perinatal depression, where the child may not cry after birth, which will result in respiratory distress syndrome. Low birth weight or small for gestational age, neonatal jaundice, the high ABO incompatibility, hypoglycemia, hypoxia, and hypothermia. Right? Postnatal problems. Here, the brain infection before 2 years of age, if it comes, maybe encephalitis or meningitis, that may result in the developmental disorder. Then the lack of environmental stimulation and poor nutrition all contributes to the risk factors of the developmental disorder. Next slide. So what kind of intervention can be given here? Let me seek your attention. See, you all have seen different domains of your developmental disorders. So what can be the intervention? Can you see the domains of, what are the 5 domains? What are the 5 domains? First we saw the motor, speech, cognitive, yes, motor, speech, cognitive, social and emotional, what is the last? The intervention is according to it, the physical therapy, speech therapy, occupational therapy, psychological counseling, vision therapy, and education and behavioral therapy. So what is this physical therapy? We will have for the psychomotor disability. So when there is any motor disabilities, we go for the physical therapy. Then the speech therapy for language disorders, and the occupational therapy
which help in the improvement of performing the tasks such as eating, dressing, or performing the day-to-day activities. Then psychological counseling for cognitive disorders, then vision therapy and educational and behavioral for autism disorder. Right. Strategies to overcome this. How to overcome a developmental disorder? First, we have to keep playing with the children. So, let them play with anything. Give a piece of paper to do anything. They can crush the paper and throw it off. They can tear the paper, or they can start digging the mud. So let they do anything. It will start improving their fine motor activity. So we should have close playing with the children to improve their motor activity. Next, we have to show and tell. We have to show and tell what is this. Each object has to be explained and make them understand the purpose of each object. Same way, we have to encourage them in social interaction. We have to give visual cues of the classroom and make them clear about what is there around them. Encourage them for interaction. Then they apply knowledge in different situations to increase the student motivation. And services and therapies should help them to identify what are the services available for the children with disorder. Right? Role of the parent. So it is painful for the parent to understand or accept that my child is having any kind of developmental disorder. So for that, the parent has to understand and accept the truth, and there is no kind of failure just because of developmental disorder. So there is good health. We have to maintain adequate nutrition, responsive caregiving, under which we have response to the child cues. Whatever the indication child gives, we have to understand that and provide care for that. You have to be attentive and you have to be consistent in providing this. Not emotional and only certain types of emotional connection. It should not be. There should be a consistent, comprehensive approach of providing care to the children, and you have to be predictable before the child expects anything from the parent. Then, opportunity for early learning and home environment. So, according to the children's needs, we can make little modification according to the need. For example, you can make the home friendly for the child, or we can have psychomotor stimulation, interactive parenting, and play. We can play with children. So all these things are helping in the early learning. Then safety and security, protect them from all hazards. So that is basic for not only for the disorder, children with developmental disorder, but also for all the children. Provide a safe environment and protect from stressful situations. So especially we have to identify the or the constant possible ways of abuse. Government of India also have taken measures to control this developmental disorder. So what are those? We can see Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. So this was done basically to identify, that is screening, diagnosing and treating the neurodevelopmental disorders. So here it is funded with more than $400 million to develop 630 screening centers and to provide early detection and proper care for the children with neurodevelopmental disorder. And there is another initiative taken by the government of India, that is, they have to include the disability question. There is government for the children that is being carried out through the government civil society partnership. So, because the child abuse is going on in different areas in different ways. To protect the child, there is an integrated child protection scheme
to save them from the childhood labor or to the trafficking of the children or to the extent of sexual abuse. So all these things, there is an integrated child protection scheme going on. And next, there is the Right to Education Act. The Right to Education Act is this: the children with cognitive developmental disorder, they should not be sustained from getting any education. All are equal and all should get the same kind of education, and everybody has the right for equal education. And the Indian Academy of Pediatrics have also taken an initiative that along with the immunization schedule, common milestone development also have to be included. It is integrated along with the the immunization schedule. So at this age group, whether the child has attained this developmental milestone or not. So immediately while we take them for this, while we take the children for immunization, we know whether there is a proper development or there is delay in the development. So it is recognized early, and early detection may prevent complications of the neurodevelopmental disorder. You know them? They are the Wright brothers who had suffered from autism, and they have invented the today's aeroplane. And George Washington was having the language difficulty. He was not able to write proper grammar, but he was the first president of the US. Same way, we have somebody known to us. He also has dyslexia. Had dyslexia. At the age of 9 years, he was diagnosed with dyslexia. But now, a big star, not having any kind of difficulty now. And Mr. Prabhu from Bangalore, this doesn't have any limitation. Only the spirit and willpower will make you achieve any desired goal. And also we have Dr. Suresh Advani from Maharashtra. He has lost, now he is suffering from quadriplegia. So he is the #1 oncologist and the pioneer for stem cell transplantation. So there are wonders happening. There is no delay or there is no developmental disorder. Only the development should be from your brain. If there is a desperate willpower for you, you will definitely attain maximum goal. With this, I will conclude. So you can take home the message that by 18 months, these things are not there. Definitely the child is in trouble. If you are ignoring, you have spoiled the entire life of the child. That is, by the end of 18 months, the child should have proper seeing or hearing. The child does not say a single word. If it is not uttering a single word, then it requires proper attention. Then does not point, wave or use gestures, or it does not follow simple commands, or does not enjoy the eye contact. It is not walking alone or prefers to use only one hand. Then it is an alarm for every one of us. So please keep it in mind. This is a take-home message for you. By the end of 1.5 years, 18 months, if this is not attained, that means the child is definitely in trouble. And last, the same red flag signs at the end of 2 years, the child is not able to see or hear properly, is not able to run or climb the stairs, it is not using at least 2 words together, or it is poor emotional expression, or no pretend to play, it does not copy action, or it does not scribble, then again the child is having a serious issue. So children, please take this very carefully. And if this is found anywhere to your friends, family, neighbor, anywhere, you refer them to the higher center for further treatment. So with this I conclude and thank you for patient listening. Thank you. Thank you, sir. I would request
Dr. Jasmine Santha ma'am and Priyanka Verma ma'am to honor our guest with a memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Proceeding forward, I would like to entreat Dr. Jasmine Santha ma'am, Principal, Suruchi Institute of Nursing. Welcome Dr. Indula Dikshit ma'am, Senior Dietitian, Charak Hospital, Lucknow. We welcome you, ma'am, with a floral bouquet. Ma'am, you are accordingly invited on the stage. Thank you, ma'am. I request Dr. Induja ma'am to please take over the dais to convey her views on nutritional needs of critically ill child. Thank you, everyone. Good evening, everyone. Thank you, thanks for inviting me here. So today we'll be talking on PICU nutrition strategies for critically ill children. मेरी ये पार्ट मैं डाइटिशियन हूँ और आप लोग आने वाले टाइम में नर्सेज होंगे, तो हमारा आपस में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आज थोड़े पॉइंट्स आप लोग सुन लीजिए, जितना आप देखो मैसेज ले जाए, आगे आपको मतलब प्रैक्टिकली बहुत काम आने वाली चीज़ है। First slide. So today we'll be talking. Our learning objectives are demographics of PICU hospitalization, physiological changes in children with PICU, adverse clinical outcomes associated with malnutrition, nutritional assessment and management of critically ill child, guidelines for nutrition intervention, be it parental or enteral, current nutrition practices and gaps in PICU, evidence on benefits of nutritional intervention, parental and enteral, nutritional support in special situations. Next, please. Demographics of PICU hospitalization. So, what common causes of admissions are seen in PICU? The most common one is diarrhea. जितने पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं, नॉर्मली पेशेंट डायरिया लेके आया हुआ होता है, या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, या malnutrition, meningitis, encephalitis, hepatic disease, renal disease, others. लेकिन जो मेनली होते हैं वो बच्चे को लूज मोशंस आ रहे होते हैं या नेक्स्ट प्लीज। Epidemiology of protein energy malnutrition in critically ill children admitted in PICU. 1 in every 5 children admitted to PICU has acute or chronic malnutrition. Clinical studies 3 मैंने ली हैं, इसमें 1981 में 16 से 20% पेशेंट जो PICU में एडमिट हुए वो malnourished थे। फिर जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, हम लोग ने बाहर का खाना पीना चालू किया, वो malnutrition बढ़ता गया। हसल एट ऑल ने 2006 में स्टडी की, उसमें 24% और डेलगाडो एट ऑल ने देखा कि 53%। हेलो गर्ल्स, प्लीज बस 5-10 मिनट्स, बस 10 मिनट्स बेयर कर लो, इम्पोर्टेंट है। आगे अगर आपको क्लिनिकली काम करना है
तो ये आपको बहुत फायदा देगा और ये कोई आपको आपकी क्लासेस में नहीं बताने वाला है, क्योंकि डाइटिशियंस और हमारा और आपका जो रोल है ना, आप अगर क्लिनिकल प्राइवेट सेटअप में जाओगे तो फिर भी आपको कोई सपोर्ट करने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में गए तो आज का लेक्चर आपको हेल्प करने वाला है। वो नहीं करूंगी, फटाफट वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, हम बहुत समझदार हो गए, हम पढ़ ले गए, तो इस हिसाब से तो मैलन्यूट्रिशन कम होना चाहिए था, लेकिन स्टडीज में ऑब्जर्व हुआ कि मैलन्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो हम खाना खा रहे हैं वो प्योर नहीं है और मोस्टली हम लोग बाहर के फूड पर रिलाई करते हैं रादर देन कि हम घर का बना शुद्ध खाना खाएं। नेक्स्ट प्लीज। Risk factors of malnutrition PICU, underlying disease condition and duration of pre-PICU illness. Next, not next slide, please go back. Increased energy demand during critical illness and poor provision of adequate nutrition. तो PICU में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो ऑलरेडी वो 50 जगह से भूखे आया है या घर पे ही उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो खाना पीना वैसे ही बंद हो जाता है। जहाँ बच्चा बीमार होता है सबसे पहले खाना पीना छोड़ता है। एक तरफ खाना पीना कम हो गया है, दूसरी तरफ बीमारी की वजह से शरीर में कैटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो रिक्वायरमेंट टू फोल्ड बढ़ी है और पेशेंट का इंटेक कम हो गया है। और दूसरा है वही बीमारियों में रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है जिसकी वजह से मैलन्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो सेप्सिस का जो हमारे पेशेंट नॉन मैलनरिश्ड है और सिवियरली मैलनरिश्ड है, इसमें कंपेयर करें तो जो सेप्सिस जिनको हुआ वो सिवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट्स में ज्यादा था, और जो हॉस्पिटलाइजेशन स्टे भी पेशेंट का, अगर पेशेंट बीमार है और मैलनरिश्ड है तो वो ज्यादा दिन हमारे पास हॉस्पिटल में भी रहेगा, उसको ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ गया, उसके बाद सेप्सिस भी बढ़ गई, आपकी बीमारी भी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से आपको रुकना ज्यादा पड़ेगा। तो इवेंचुअली वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? जितने ज्यादा दिन आप हॉस्पिटल में रुके उतना आपका खर्चा भी तो हो गया। तो बेहतर होगा कि हम पहले से वेल नरिश्ड रहें, तो बीमारी का इलाज होगा, मैलन्यूट्रिशन हमको नहीं क्योर करना पड़ेगा। तो वैसे है हम दो चीज डील कर रहे हैं, वरना हमको सिर्फ एक बीमारी हैंडल करनी पड़ेगी, रिकवरी जल्दी होगी, लेंथ ऑफ स्टे कम होएगा, खर्चा कम होएगा। नेक्स्ट प्लीज। Physiological changes in children in PICU. Next please. Impact of critical illness on nutritional status of children admitted in PICU. Critical illness has a major important impact on nutrition in children in ICU. Children are increased risk of nutritional deficiencies. उस टाइम पे पेशेंट की एनर्जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेज में है पेशेंट, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन गड़बड़ हो गया और प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ गया है, ऑर्गन डिस्फंक्शन है, ऑल्टर्ड फंक्शन, जिसकी वजह से जो खाना खा रहा है प्रॉब्ली वो अब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा बॉडी में अच्छे से। तो इन सब रीजंस की वजह से पीआईसीयू में मैलन्यूट्रिशन बहुत कॉमन है। नेक्स्ट प्लीज। Adverse clinical outcomes associated with malnutrition. Next. Common hospital practices that may result in deterioration of nutritional status. किन वजह से कि हॉस्पिटल में हमारे पास बच्चा आया और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ऊपर होता गया, तो उसके रीजंस हैं, पहला एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट और लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट। हेलो। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए बहुत तरह के टूल्स आते हैं, जैसे सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट टूल है, मैलन्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्पीच टूल है, मस्ट करके ये नेट पे मिल जाते हैं। अभी मैं एक आइडिया भी दूंगी और आप लोग थोड़ा देखना कि जिनको जब हम असेस करते हैं, स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट हमारा मैलनरिश्ड है कि नहीं है, और अगर है तो कितना मैलन्यूट्रिशन है उसको, और उसको हमको कैसे डील करना है। तो जैसे थर्मामीटर को यूज करते हैं आपका टेम्परेचर पता करने के लिए, वैसे पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कैसे होती है? टूल्स यूज करके। प्लीज गो बैक। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड केयर बिटवीन मेडिकल एंड डाइटेटिक स्टाफ, हमारा और आपका हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता है। मैं राउंड पे गई, मैंने पूछा पेशेंट ओरली अलाउड है कि नहीं है, आपको कंसल्टेंट ने बताया नहीं और आपने पूछा ही नहीं कि हमें इसे अलाउ करना है कि नहीं,
तो मुझे बोला जाएगा एनपीओ, जबकि हम पेशेंट को शायद ओनली अलाउ कर सकते थे। या कितनी बार मैं राउंड पे गई हूँ, वहां पर कोई प्रेजेंट ही नहीं है, या आप इन्फॉर्म ही नहीं है अपने पेशेंट के बारे में। तो ये आप हमें बताओगे कि मैम पेशेंट ओनली अलाउड है, पेशेंट आरटी फीड पे है, मैम इसका आप देख लीजिए इसका पोटेंशियल लेवल स्लो है। तो जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे प्रॉपर्ली, तब हम पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस हम करेक्ट कर पाएंगे। फिर फेलियर टू मेंटेन पेशेंट्स डाइटरी रिकॉर्ड्स एंड एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा। हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस नॉर्मली नहीं है कि पेशेंट एक बार एंथ्रोपोमेट्री, तो चलिए पेशेंट आया आपने कर लिया, लेकिन सुबह से शाम तक पेशेंट खा क्या रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ये होता है कि हाँ खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, नहीं खाया, लेकिन कितना खाया ये पता ही नहीं। और हम जो खाना बेचते हैं वो कैलकुलेटेड होता है कि ब्रेकफास्ट में इतना कैलोरी प्रोटीन फैट है, डिनर में इतना है, लंच में इतना है। तो अगर वो हम प्रॉपर देख नहीं पा रहे हैं तो हम असेस नहीं कर पाएंगे कि कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है हमारे पेशेंट को। Donors, please stay at the back. Frequent withdrawing of food to accommodate lab investigations. गए खाना रखा हुआ था, क्यों नहीं दिया खाना पेशेंट को? मैम एक्सरे कराने गया था, मैम अभी एमपीओ किया गया 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है कि लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने वो खाना ही रोक दिया। तो अभी क्या करना है इस कंडीशन में? नॉर्मली एक होता है पेपा प्रोटोकॉल, उसमें क्या करते हैं जो हमारा मील मिस हुआ है वो आप डाइटिशियन को बताओगे कि ये मील्स मिस हुए हैं, तो वो हमारी ड्यूटी है कि उतना कैलोरी प्रोटीन फैट या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हम अगली मील में कॉम्पनसेट करें। क्योंकि अगर हमने बोला है कि दिन भर में 100 देना है, आपने 50 मिस कर दिया, पेशेंट को 50 खिला के तो हम मैलन्यूट्रिशन उसका ठीक भी कर लेंगे। तो हमें जो नेक्स्ट कमिंग मील में 50 प्रोवाइड करना है वो हम पिछला जो मिस हुआ है उसको 25 10 10 समाओ करके हमें इस 50 को 100 करके पूरा करना पड़ेगा। फिर डिलेड इनिशिएशन ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन पेशेंट्स। जो स्टडीज है वो कहती हैं कि पेशेंट का अगर फंक्शनिंग गट है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन आपको पेशेंट को डाइट देना है, बी इट एंट्रल बी इट पेरेंट्रल। लेकिन हम पेशेंट को बिना किसी रीजन के 1 2 3 दिन भूखा नहीं रखेंगे। जितना डिले करते जाएंगे उतना ही न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होता जाएगा और पेशेंट मैल न्यूट्रिशन की तरफ पुश होगा। नेक्स्ट प्लीज। Consequences of malnutrition in hospitalized children. The consequences क्या है? Higher risk of acquiring infection, nosocomial infection, hospital acquired infections, क्योंकि पेशेंट हमारा malnourished है, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो फिर ये इन्फेक्शन अक्वायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलेड वुंड हीलिंग, क्योंकि अब आपका पेशेंट malnourished है तो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी वुंड हीलिंग के लिए है वो प्रोटीन बॉडी एनर्जी के लिए यूज करने लग जाती है, तो फिर वुंड भी हमारा हीलिंग डिले हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्टर्ड गट फंक्शन। जब हम बीमार होते हैं तो गट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहती। मान लीजिए आपके विलाय खराब हो गए हैं तो उस वजह से भी न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाएगा। लॉन्गर डिपेंडेंसी ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तो वेंटिलेटेड होने का चांसेस लंबी ड्यूरेशन तक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे। वही बीमारी अगर हम बहुत स्लो रेट में कर रहे हैं कवर अप तो फिर लेंथ ऑफ स्टे बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन क्रिटिकली इल चाइल्ड। नेक्स्ट। Importance of optimal nutrition in critically ill children. Fundamental goal of optimal nutrition. Healthy child में आपका कैलोरीज प्रोटीन किस लिए यूज होएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन क्रिटिकली इल चाइल्ड में ग्रोथ डेवलपमेंट तो है ही है, प्लस इलनेस से फाइट करने के लिए भी हमें कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए, मेंटेनेंस ऑर्गन फंक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डिजीज। तो 2-fold रिक्वायरमेंट हमारी इंक्रीज हो जाती है। और होता क्या है, पेशेंट ने खाने बंद कर दिया, जो बेसिक था वो पूरा कर नहीं रहे हैं, तो जो 2-fold रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई वो कहाँ से हुई? तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होएगा एनर्जी के लिए, ना कि बॉडी बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नीड फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन क्रिटिकली इल चिल्ड्रन। अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन क्रिटिकली इल चाइल्ड। Importance of assessment of nutritional status in critically ill children. First is diagnosis of malnutrition. पहले आप पता तो करो कि पेशेंट कितना malnourished है,
कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितना मैलनरिश्ड होगा उतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। देन इज प्लानिंग फॉर ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जब हमें पता चला, डायग्नोसिस बनी कि किस लेवल का मैलन्यूट्रिशन है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम डिजाइन करेंगे। फिर इनिशिएशन ऑफ अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा कि विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन हमें न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट प्लीज, इनिशियल न्यूट्रिशनल स्क्रीन, प्लीज go one side back to the previous slide. Is basic screening is done for age and gender, anthropometric measurement, percentile for age and gender by growth chart, screening for risk factors, altered diet, recent changes body weight or dietary intake, ability to eat and retain food, medical conditions, symptoms interfering with feeding, history of growth failure. Initial nutritional screening at the time of admission followed by regular nutrition monitoring during the PICU stay improves the efficacy of nutritional support. Next please. General evaluation and history. Medical and diet history should include past medical history including recent hospitalization, to identify any medical condition or medicines that affect nutritional status of child, to identify unusual eating behaviors and cultural factors affecting nutrition intake. तो पेशेंट जब हमारे पास एडमिट हुआ है तो हमारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए कि पहले से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बुखार आ रहा था तो कितने दिन से भराना था। अगर एक दो दिन पहले से बुखार आ रहा है तो पेशेंट ने खाना पीना नहीं बंद किया होगा, लेकिन अगर पेशेंट हफ्ते भर से या 15 दिन से बुखार झेल रहा है तो खाना पीना अफेक्ट हुआ होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। पास में उसकी कोई सर्जरी हुई थी, हमारे पास आने से पहले वो कहीं और हॉस्पिटलाइज रह चुका है, कितने दिन पहले सर्जरी हुई थी, क्या खान पान चल रहा था, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम प्लान कर सकें। क्योंकि अगर कोई पेशेंट 10 दिन से नहीं खा रहा है और हम उसको सुबह दोपहर शाम थाली लगा के भेजने लगे हैं कि भाई खाओ, वो नहीं खाएगा। तो हमें ग्रेजुअली उसे देना है कि लिक्विड से स्टार्ट किया, फिर सॉफ्ट, फिर नॉर्मल डाइट पे लाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास अभी कल बीमार पड़ा था, फीवर आया, आज आया, तो हम नॉर्मल डाइट उसको दे सकते हैं और वो ले भी लेगा। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप बच्चे से नहीं ले सकते तो पेरेंट, ग्रैंडफादर जो भी है वहाँ पर प्रेजेंट, आप उससे हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री हमें बहुत हेल्प करती है आगे की प्लानिंग में। फिर पोस्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, recent surgeries or procedures affecting nutritional status. कोई GI सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उसका फीडिंग इम्पैक्टेड है, तो ये भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल चॉइसेस, बच्चा हमारा दाल नहीं खाता, बच्चा अंडा नहीं खाता, बच्चा दूध ही नहीं पीता है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो ये सब चीजें हमें हिस्ट्री में पता चलेगी। नेक्स्ट इज डाइट हिस्ट्री, कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन दुबले ही रहते हैं, कोई बच्चा कुछ नहीं ज्यादा खाता लेकिन मोटा होता है, तो हम एक असम्पशन लगा लेंगे कि मोटा ही तो अच्छे से खाता होगा, ये गारंटी नहीं है। तो हमें डाइट हिस्ट्री भी पूछना पड़ेगा, एक 24 आवर डाइटरी रिकॉल कि 24 घंटे में पिछले क्या खाया था, या नॉर्मली ये 24 घंटे में क्या खाता है। नेक्स्ट प्लीज। जनरल इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरोफैरिंक्स, एनाटॉमिक कॉजेस फॉर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, क्या उसका कुछ एनाटॉमी में गड़बड़ है जिसकी वजह से बच्चा खा नहीं पा रहा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये एग्जामिनेशन इसका करना पड़ेगा। एब्डोमेन, ऑर्गेनोमेगली और टेंडरनेस मे बी रिलेटेड टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, उसका लिवर एनलार्ज है, या पेशेंट को असाइटिस है, या कोई किडनी डिसऑर्डर है, ये सब चीजें होंगी तभी तो खाना इम्पैक्ट होएगा, तभी तो न्यूट्रिशन इम्पैक्टेड रहेगा। तो ये भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल एडिमा, टेम्पोरल वास्टिंग, थिन एक्सट्रीमिटीज, साइंस ऑफ malnutrition, क्वाशियोकर, मरासमस, अनीमिया, ये सब चीजें भी हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो दिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन। द सब्जेक्टिव ग्लोबल न्यूट्रिशन असेसमेंट, ये SGNA टूल है जो मैंने आपको बोला था, एक फॉर्म टाइप का होता है जिसमें बस आपको टिक लगा के भरना है पेरेंट से पूछ के, और आपको एक जनरल वो पिक्चर मिल जाएगी कि पेशेंट आपका कितना malnourished है। It combines elements of history and physical examination and has been validated in pediatric surgical patients. ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी कुछ भी बनाया और हमने अपना असेसमेंट कर लिया, ये वैलिडेटेड टूल्स होते हैं।
चाहे इसको एसपेन ने बनाया हो या आपकी पीडियाट्रिक सोसाइटीज हैं उन्होंने बनाया हो या WHO ने डिजाइन किया होगा, तो हमें वैलिडेटेड टूल्स यूज करने हैं। ये ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Assessment of body composition. Current methods used for assessment of body composition include bedside technique, bioelectric, and impedance analysis are impractical in critical care setting. Need for assessment of body composition to plan for ongoing nutrition intake, to monitor dynamic changes in body compartment, to assess the adequacy of nutritional support regimen during critical illness. वैसे तो बायो इम्पीडेंस एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्योंकि मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर हमारे पास है मशीन तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर हम स्क्रीनिंग टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लेबोरेटरी बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ क्रिटिकली इल चिल्ड्रन, एल्ब्यूमिन, जो is it is used in clinical practice. It is a prognostic indicator useful for long term assessment, but the limitation is albumin की long half life होती है। आज जो हमको पता चल रहा है वो 15-20 दिन पहले हुआ था, तो एल्ब्यूमिन अगर हमको बहुत ज्यादा मैलनरिश पेशेंट है तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिर प्री एल्ब्यूमिन, इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, 203 दिन, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि लिवर फंक्शन इस पे अफेक्ट करते हैं, किडनी पे प्रॉब्लम है तो भी अफेक्ट हो जाएगा, तो बायस ले आता है। फिर ट्रांसपेरेंट है, इट इज मोर सेंसिटिव देन एल्ब्यूमिन रिफ्लेक्टिंग प्रोटीन डेप्रेशन, इसका भी लेकिन वही कि लॉन्ग हाफ लाइफ है। फिर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट हाफ लाइफ, देन दिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय लिवर। यूरिनरी नाइट्रोजन, ये मार्कर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, एस्टिमेट्स डेली प्रोटीन लॉसेस विद एडिक्वेट एक्यूरेसी, बट इट इज अफेक्टेड बाय डाययूरेटिक्स, रीनल फंक्शन, प्रोटीन इनटेक। तो ये पार्ट बेसिकली हमें कंसल्टेंट बताता है कि मैडम एल्ब्यूमिन कम है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। Anthropometric measurements, weight. Regular monitoring of weight twice weekly aids in assessment of nutritional status in PICU stay. Waterlog classification for acute and chronic malnutrition. ये दो फॉर्मूले हैं, जो एक हमें फास्टिंग बताता है, मसल फास्टिंग, दूसरा हमें स्टंटिंग, ग्रोथ बताता है। इसकी ये रेंजेस है, इनसे आपको पता चलता है कि पेशेंट हमारा कितना malnourished है या स्टंटेड है। नेक्स्ट। Anthropometric measured body length. Body length is important in initial assessment to obtain weight for height indices and to assess chronic nutritional status. Measurement of body length is important in critically ill children who have prolonged PICU stay. जिसका हम weight नहीं ले सकते, उनका height for age हम weight for height indices को हम use करते हैं। Next please. Z-score for anthropometric measurement. Z-score enables the comparisons of child's weight or height with the average weight or height for child of the same age. Z-scores are preferred to percentiles to assess anthropometric data from population with increased risk of nutrition. जैसे growth chart होते हैं, weight for height charts होते हैं, वैसे ही Z-score chart होता है, ये 2 से 5 years का होता है। Next please. Anthropometric measurements, body circumference and skin fold thickness. क्या आप लोग जानते हो कि mid upper arm circumference, calf circumference, abdomen circumference and skin fold thickness. They provide information on fat mass and fat-free mass. Mid upper arm circumference is an easy screening tool for malnutrition. इसके लिए आप एक टेप लेते हैं, वैसे accuracy टेप आते हैं, वरना normal टेप भी आप यूज कर सकते हैं। Next please. Assessment of energy requirements during critical illness. Indirect calorimetry is only bedside tool which measures resting energy expenditure accurately in PICU, as critical illness impacts resting energy expenditure in ways that are not estimated using standard equations. तो इसके ये फॉर्मूले हैं, एक शॉफील्ड का है और एक WHO का डिजाइन है। आपके जो सराउंडिंग जो भी आपको प्रैक्टिकल पड़े वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। टारगेटेड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री इन PICU का
the criteria for targeted measurement of resting energy expenditure in PICU is for underweight and overweight children, children with more than 10% weight gains or loss during ICU stay, children who fail to achieve the prescribed calorie goal consistently, require muscle relaxation for more than 7 days, neurological trauma with evidence of dysautonia, children with oncological disorders, children with thermal injury, children requiring mechanical ventilator support for more than 7 days, length of stay in PICU more than 4 weeks, children suspected to be severely hypermetabolic or hypermetabolic. Next, please. Nutritional risk screening tool developed for children. जैसे मैंने आपको बताया था ये टूल्स हैं, SGNA है, स्टैम्प है, स्ट्रॉन्ग किड्स है और PYMS है। ये आप नेट पे देखिएगा, वही टिक लगा के कि खाना कितने दिन से नहीं खा रहे हैं, कितने दिन से बीमार हैं, और फिर वो 1 2 3 4 करके स्कोरिंग होती है। तो 1 कि अभी पुअरली मैलनरिश्ड है, 2 मैलनरिश्ड है, 3 नॉर्मल है, तो ये आप वहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट प्लीज। Strong Kids Nutrition Screening Tool is a validated screening tool. It has been जैसे मैंने कहा था कि कोई एक गवर्निंग बॉडी होती है जो टूल डिजाइन करती है, ये एस्पेन ने डिजाइन किया है, तो एक रिलायबल टूल है कि इसको हम यूज करेंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि पेशेंट मैलनरिश्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे ही ये स्टैम्प है, इसका फॉर्मेट ये है, ये भी आप नेक्स्ट से नोट देखिए, जैसे इसमें 1 2 0 1 ऐसे करके दिया हुआ है कि 0 इज न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर नहीं है, 2 ऐसे करके है, तो इन सब को जब ऐड करते हैं तो आता है हाई रिस्क, लो रिस्क, नो रिस्क, तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं पेशेंट मैलनरिश्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स इन क्रिटिकली इल चिल्ड्रन एडमिटेड इन PICU। एनर्जी एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। तो इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है? कार्बो जो कैलोरीज हमें लेनी है 50 to 60% ये हम कार्बोहाइड्रेट से डिराइव करेंगे, 25 से 35% ये हम प्रोटीन से डिराइव करेंगे, और 10 से 25% हम फैट से डिराइव करेंगे। The primary goal of macronutrient intake during critical illness is to avoid underfeeding, overfeeding of calories, and to facilitate provision of enough protein to prevent lean body mass. जैसे नॉर्मली आप लोग ने सुना होगा कि पेशेंट आईसीयू में तो क्या दोगे? हाई प्रोटीन डाइट। सब लोग क्या कहते हैं? हाई प्रोटीन देना है, हाई प्रोटीन देंगे, अच्छा प्रोटीन देंगे। नहीं, प्रोटीन तो हम बाद में देंगे, पहले हम हाई कैलोरी डाइट देंगे, क्योंकि जो बॉडी प्रोटीन को ब्रेक कर रही है कैलोरी डिराइव करने के लिए, बेसिक फंक्शन के लिए, पहले हम वो पूरा करेंगे, बॉडी को कार्ब्स देंगे कि वो कैलोरी वहां से लेना चालू करे और हमारा जो प्रोटीन रिजर्व है उसको स्पेयर करे। तो हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन की बात होगी, सिर्फ हाई प्रोटीन की बात नहीं होगी। जब हाई कैलोरी हाई प्रोटीन देंगे तो हाई कैलोरी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट आउट करेगी डेली की, हाई प्रोटीन जो आपका इलनेस में मेटाबॉलिज्म हुआ है उसको कवर अप करने के लिए होगा। नेक्स्ट प्लीज। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें क्या आता है? जिंक, कॉपर, क्रोमियम, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, इनकी रिक्वायरमेंट ये है। नॉर्मली ये हम लोग जो आपका आता है इंजेक्शंस आते हैं ना मल्टीविटामिन वाले, उससे ही हम पेशेंट्स में कवर अप करते हैं और डाइट से कोशिश करते हैं पूरा करने की। नेक्स्ट प्लीज। ये विटामिन्स की रिक्वायरमेंट हम विटामिन डी मैनेज कर लेते हैं, विटामिन ई, बी, ये सब हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाकी इनका भी सप्लीमेंटेशन हम लोग मेडिकेशन या इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट ये भी नेक्स्ट विटामिन सी है। नेक्स्ट वाटर रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट हमारा हाइड्रेटेड भी अच्छे से होना चाहिए, सिर्फ कैलोरी प्रोटीन देके काम नहीं चलेगा, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? 0 से 10 kg के बीच का अगर बच्चा है तो 100 ml पर kg बॉडी वेट पर डे देना है। अगर 10 से 20 kg है तो 1 लीटर प्लस 50 ml पर kg for each kg more than 10 kg। हर 10 किलो पे 50 ml और एड ऑन हो जाएगा 1 लीटर में।
For more than 20 kgs हम 1500 ml लेंगे, उसमें 20 ml per kg for every kg which is more than 20 kg लगेगा. इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन की पोटेशियम एंड सोडियम जो पेरेंटल फॉर्मूले उनका दिया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. Guidelines for nutritional intervention, parenteral and enteral nutrition. As per recommendation for nutritional support and critically ill children, nutritional screening at the time of admission, ये मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत important है. Next is nutritional assessment with nutritional plan in children and in pre-morbid malnutrition. IC for admission, estimation of resting energy expenditure. Enteral preferred mode for nutrition in critically ill children with functional GI. हम कब डिसाइड करेंगे कि हम पेशेंट को उसे हमें खाना देना है कि हम आरटी डाल देंगे कि हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे. अगर हमारा फंक्शनिंग जीआई है तो पहली हमारी कोशिश रहेगी कि हम ओरली पेशेंट को खाना खिलाएं. लेकिन अगर किसी भी रीजन से पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, अनकॉन्शियस है, सिडेटेड है, तो हम ट्यूब फीड्स देंगे. लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम जीआई को गट में यूटिलाइज करें. और किसी भी सिचुएशन में अगर फंक्शनिंग जीआई नहीं है तब फिर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जाएंगे. नेक्स्ट. ESPH-GN recommendation indication for enteral and parenteral feed in critically ill patient. Enteral nutrition कब है? जब inadequate oral intake है due to trauma, tumors, mechanical ventilation, etc. Disorders of digestive absorption, disorders of gastrointestinal motility, increased nutritional requirement due to chronic renal diseases or births. Parenteral nutrition जो अभी मैंने कहा था कब देंगे? When there is chronic intestinal failure, severe malnutrition and growth failure, disorders in which a child is unable to tolerate nasogastric or oral feed. What to feed? Enteral feed. जो हमारा मुंह से feed दे रहे हैं, एक होती है polymeric feed, which is cow milk protein based feed. दूसरा है low molecular formula feeds with oligopeptide derived from protein hydrolysates. High fat feed provide more than 40% of energy content as lipid. Disease specific enteral formulae. Normally जो हम जैसे Ensure आता है, हमारा Protein X आता है, ये polymeric feeds होते हैं. उसके बाद कुछ होते हैं जो calorie dense होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फैट कंटेंट ज्यादा होता है. डिजीज स्पेसिफिक एंड्रल फॉर्मूले, जैसे किडनी के अलग से फॉर्मूले, रीनल फॉर्मूला आते हैं, लिवर का हेपाटिक फॉर्मूला आता है, कैंसर के ऑन्को फॉर्मूले आते हैं. तो अगर हमें स्पेसिफिक डिजीज हमारा पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो हम डिजीज स्पेसिफिक फॉर्मूले भी यूज करते हैं. ब्लेंडराइज्ड फीड वर्सेस कमर्शियल एंड्रल फीड. ब्लेंडराइज्ड फीड क्या है? मिक्सिंग में आपने दूध में अंडा, चीनी, तेल, या आपने सूप में दाल का पानी, नारियल का तेल, पानी, ये सब चीजें यूज करके जो हम बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लेंडराइज्ड फीड. दूसरे कमर्शियल फॉर्मूला आते हैं, डब्बे में आते हैं, उसमें होता है कि 100 ml पानी 4 चम्मच पिलाइए, आप दिन में इतनी फीड दे दिए, आपकी कैलोरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वो मीट आउट हो जाएंगी. दोनों में फर्क क्या है? जो हमारा हम ब्लेंडराइज्ड फीड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. मैंने बोला 1 ग्लास दूध, मेरे मन में था भैंस का दूध यूज करेंगे, हाई कैलोरी हाई फैट है. पेशेंट ने क्या यूज किया? उसका गाय का यूज, उसने यूज कर लिया गाय का दूध. अब कैलोरीज भी कम हो गई, फैट भी कम हो गया. तो यहाँ पर वेरिएशन हो गया. जो मैंने प्लान किया था, जो पेशेंट ने दिया, वो गलत हो गया. दूसरा है पुअर ट्यूब फ्लो ड्यू टू हाई ऑस्मोलारिटी. उसमें सत्तू डाला था, थिक था, ऑस्मोलारिटी भी हाई हो गई. तो वो एक तो ट्यूब से जाना डिफिकल्ट, लेकिन और क्योंकि वो हाइपर ऑस्मोलर है तो वो जब बॉडी में जाएगा तो वो डायरिया कॉज करेगा. तीसरा है बैक्टीरियल कंटामिनेशन, चांसेस बहुत आ गए. मैंने फीड बनाई, मैंने हाथ नहीं धोए थे, बर्तन साफ नहीं था, जो दूध हमने उबाला था वो खुला पड़ा हुआ था, उसमें मक्खियां बैठ रही थी. तो यहाँ कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ये सारी चीजें हमारे जो रेडीमेड फॉर्मूला है इसमें कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हाथ हमारा कम इन्वॉल्व हुआ है, पाउडर है, गीला नहीं है. अगर आपने पानी सही यूज कर लिया और सही नंबर ऑफ स्कूप यूज किए तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट डिलीवरी भी हो जाती है और कंटामिनेशन भी प्रिवेंट हो जाता है. लेकिन फर्क हो जाता है फिर कॉस्ट का. जो फॉर्मूला मार्केट से आया है वो 1000 रुपए का करता है, जो घर से हमने बनाया है
वो हम दिन भर की फीड 200 रुपए में दे देंगे। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या फिजिबल है, हमारे पेशेंट के लिए क्या फिजिबल है। और अगर हम किसी को ब्लड राइज फीड को ही प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर डायरेक्शन से बनाएं तो हमारे लिए इकोनॉमिक हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। फिर ये स्टडी है जो बताती है कि फूड टाइम प्रिपरेशन में क्या फीड का कॉम्पोजिशन था और 18 घंटे बाद क्या हुआ जो ब्लेंडराइज फीड है। ये तो आपको भी पता है कि अभी आपने जो खाना खाया है अगर आप उसको 18 घंटे खुला रखोगे तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। तो इस वजह से ब्लेंडराइज फीड में चांसेस होते हैं कि अगर हमने रखी हुई फीड दे दी, मैंने भिजवाई थी फीड, पेशेंट गया था एक्सरे कराने 4 घंटे बाद थी तो वो फर्मेंट हो गई थी तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। हाउ टू फीड एंटरल पेरेंटरल। एंटरल फीड 2 टाइप की होती है, एक गैस्ट्रिक, दूसरा पोस्ट पाइलोरिक। कहाँ तक फीड जा रही? एनजी फीड, नेजो गैस्ट्रिक, नाक से डाली पेट तक गई। दूसरी होती है एनजे फीड, नाक से डाली, पोस्ट पाइलोरिक थी वो जेजनम तक गई। फिर दूसरा है पेरेंट्रल, जो रूट होते हैं सेंट्रल पेरिफेरल। फिर gastric feeding is preferred to post-pyloric feeding as it allows for secure positioning of gastric tubes and is more physiological. बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमें स्टमक मिल जाता है तो हम बोलस फीड दे सकते हैं कि एक बार एक फीड दे दी हमने जो हमारा पेट तक गया है ट्यूब, चाहे हमने 100 ml दी है चाहे 200 दी है तो वो पेट में गई और वो प्रॉपरली धीरे धीरे डाइजेशन अब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर हमने पोस्ट पाइलोरिक फीड दी है तो पेट हमारा रिजर्वायर का भी जो काम करता है स्टमक, फिर वो तो हमारे पास है नहीं तो हम बोलस फीड दे नहीं सकते तो हमें ग्रेविटी बैग यूज करना पड़ेगा। एक तो वहां पर वो भी एक खर्चा बढ़ गया प्लस ग्रेविटी बैग की सफाई का भी एक हमारा हेडेक हो गया। तो बेटर है अगर ऑप्शन है हमारे पास तो हम नेज़ो गैस्ट्रिक फीड प्रेफर करते हैं ओवर पोस्ट पाइलोरिक ट्यूब है सॉरी। नेक्स्ट, central and peripheral venous access. Peripherically inserted central catheters and tunneled central venous catheters should preferably be used to provide central venous access in children receiving prolonged parenteral nutrition. अगर हमें ये है कि पेशेंट को अभी हम नहीं दे पा रहे फीड, एंट्रल नहीं दे पा रहे तो फिर हम टीपीएन पे ले लेंगे और फिर कितने दिन चलना है टीपीएन और क्या ऑस्मोलैरिटी है वो हमारा डिफाइन करेगा कि हमें सेंट्रल वेन से देना है कि पेरिफेरल वेन से देना है। हाउ मच टू फीड एंट्रल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन ऑफ एंट्रल फॉर्मूला इज रिकमेंडेड बेस्ड ऑन एज चाइल्ड। स्टैंडर्ड पॉलीमेरिक फॉर्मूला बेस्ड ऑन काउ मिल्क, प्रोटीन एंड फाइबर। ये वही है कि फॉर्मूले आते हैं कि बच्चे को हमें कितना देना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट है 75 to 90 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट पर डे। अमाइनो एसिड इंटेक बेसिकली पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम फीडिंग बैग्स यूज करते हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड आते हैं, उसमें चेम्बर्स होते हैं और उसमें होता है कि ये बैग इतना 1 लीटर का है, ये इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतना फैट देगा। तो उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर इतना कैलोरी प्रोटीन देना है तो वो एक बैग में पूरा पड़ेगा कि हाफ बैग में पूरा पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाउ लॉन्ग टू फीड। अगर हम पेरेंटल फीड पे भी है हमारा पेशेंट तो हमें कोशिश करनी है कि पहले पेशेंट को बिल्डअप कर ले और अगर उसका फिर गट फंक्शनिंग हो गई है तो हम उसको तुरंत से एंटरल में ले लेंगे क्योंकि टीपीएन कॉस्ट वाइज बहुत एक्सपेंसिव होता है। Reduction in amount of parental nutrition may be attempted as soon as the child is stable and optimal nutritional state is reached. Next, please. Recommendation for monitoring parameters for children in enteral and parenteral. Enteral में regular review of nutritional status including intake, weight, height, biochemical indices, general clinical state, gastrointestinal function, tube integrity and tube related composition. एज डाइटिशियन मेरा ये रोल रहता है कि हमने अगर 50 ml 3 hourly स्टार्ट किया फिर हम क्या उसको 100 ml 3 hourly पे ला पाए, क्या हम 150 पे लेके आए। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो लेटर ऑन चीजें इम्प्रूव करके हम ओरली ला सकते हैं, लेकिन अगर ये चीजें डिक्लाइन कर रही हैं तो फिर ये इंडाइसेस है कि पेशेंट नहीं टॉलरेट कर रहा है तो फिर हम उसको पेरेंटल पे ले जा सकते हैं।
Trace elements and vitamin status should be monitored. Monitoring of refeeding syndrome, electrolyte, metabolic, nutritional parameters. पेशेंट को बहुत ज्यादा फीड किया, पेशेंट को लूज मोशन आ गया। हमने कोशिश करी थी कि हम खिला पिला के 2-3 दिन में ठीक कर देंगे और उसको लूज मोशन आ गया, नहीं टॉलरेट किया बॉडी ने। तो हमें इतना भी नहीं खिलाना है, टाइम लेना है कि अगर पेशेंट का खाना पीना छूटा है 4-5 दिन हफ्ते में, वो 1 दिन में नहीं ठीक होगा, उसके लिए हमें चाहिए भी 3-4 दिन। तो ग्रेजुअली बिल्डअप करना है और स्लोली फूड इंटेक बढ़ाना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड बॉडी कॉम्पोजिशन in children on long-term PN, daily intake and output of fluids, daily monitoring electrolytes, routine monitoring of triglyceride level, monitoring serum concentration of trace element and minerals. इसमें अगर पेशेंट को स्ट्रोमा बैग लगा हुआ है तो हमें उसका भी आउटपुट देखना पड़ेगा, यूरिन आउटपुट देखना पड़ेगा और कितने टाइम मोशन पास किए, ये सब चीजें भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एंट्रल फीडिंग। आर फर्स्ट refeeding syndrome, वही बहुत ज्यादा एकदम से दे दिया तो लूज मोशन आ गए। कंटैमिनेशन ऑफ फीड प्रिपरेशन के टाइम या डिलीवरी के टाइम। ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन, जैसे नॉर्मली विटामिन के वार्फरिन चल रहा है, नहीं देना है, लेकिन खाने में हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो हमें ये चीज भी देखनी पड़ती है। कैथेटर, फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन, कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम, अब उससे पेशेंट को निमोथोरैक्स डेवलप कर सकता है, हीमोथोरैक्स डेवलप कर सकता है, सेप्सिस हो सकती है क्योंकि पंक्चर किया है हमने डालने के लिए, तो फिर पंक्चर वाली साइड से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रीफीडिंग सिंड्रोम, वही इसमें भी चांसेस है कि लूज मोशंस आ जाएंगे। और पेन एसोसिएटेड कोलेसिस, ये भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन नॉर्मली बहुत हाई होता है फैट। नेक्स्ट प्लीज, गैप्स इन करंट न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस। गैप्स क्या है कि हम नहीं दे पा रहे प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसमें क्या है, heterogeneity in practices due to lacks of evidence-based medicine, estimation instead of accurate measurement of nutritional need। ये कहते हैं कि खा रहा है, कितना खा रहा है मैम, ठीक खा रहा है, ठीक का मतलब क्या है, आपके हिसाब से ठीक 1 रोटी हो सकती है, मेरे हिसाब से ठीक 2 रोटी है, तो ये हमारा जो असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, ये एक इशू है। फिर अंडर प्रिस्क्रिप्शन एंड इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू स्ट्रिक्ट फ्लूइड वॉल्यूम मॉनिटरिंग। किडनी का पेशेंट है, 500 ml के ऊपर देना ही नहीं है लिक्विड, तो वहां पर फिर हम 500 ml में कैसे देंगे, तो यहाँ पर थोड़े इश्यूज आ जाते हैं। फिर इंटरप्शन ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम, दे रहे हैं लूज मोशन आ गए तो हम वापस से पीछे पहुंच गए। लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, मैं अभी ये बड़ा सब में होता है, तासीर ठंडी है, तासीर गर्म है, चावल नहीं खिलाएंगे क्योंकि ठंडी तासीर होती है। हम अपने सिनेरियो में इसको नहीं मानते, हम चावल खिलाते हैं और चावल से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, आपने लिख के दिया था लेकिन पेरेंट खिला ही नहीं रहा पेशेंट, तो आप तो ये पूछो कि हम दे रहे हैं लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। फिर लैक ऑफ रूटीन असेसमेंट ऑफ पेशेंट, असेसमेंट ही नहीं हो रहा, आए नहीं ब्लड के पेशेंट हमारे पास, तो हम असेस कैसे करेंगे कि न्यूट्रिशनल स्टेट, हमने 15 दिन पे बुलाया था, वो 1 महीने बाद आ रहा है, तो फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, आउटकम ऑफ सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन पीआईसीयू, फिर वही है कि आपका अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर नहीं है, प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन होगा, CO2 बर्डन बढ़ जाएगा कार्बोहाइड्रेट ओवरफीडिंग से, फिर लेंथ ऑफ स्टे बढ़ेगा, मोर्टालिटी बढ़ेगी, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर भी मोर डिलींग डिलीवरी एक विशियस सर्कल है कि अगर खाना पीना ढंग से नहीं है पेशेंट का, बी एंट्रल और पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टेटस प्रॉपर नहीं, पेशेंट मैलनरिश्ड है, तो ये चलता रहेगा और हमारा पेशेंट रिकवरी बहुत पुअर होगी। नेक्स्ट प्लीज, फिर नेक्स्ट प्लीज, next please, evidences of benefits of nutritional intervention, parenteral nutrition and enteral nutrition. Next please, फिर improved enteral energy intake is associated with significant reduction in morbidity and mortality. Next please, फिर ये भी स्टडीज हुई हैं जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि जिन लोगों को enteral nutrition
96 आवर्स में मिल गया, उसमें कितनी डेथ्स हुई, कितने सर्वाइव किए। तो इसमें हमारा हम देखेंगे कि जिन लोग को न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको मिल गया विद इन 96 आवर्स, उसमें डेथ कितनी हुई, 162 पेशेंट्स में। और जितने सर्वाइव किए कितने, 92% पेशेंट्स। फिर जिनको लेस देन 25% जो हमारा गोल था उतना न्यूट्रिशन मिला, तो उसमें जो डेथ थी वो 6.26% थी, और जो सर्वाइव किए वो 93.7। ओवरऑल ये यही कहना चाह रहे हैं कि जितनी अति अच्छा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन होगा उतनी अच्छी रिकवरी होगी, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। Impact of enteral feeding protocols on nutritional practices in critically ill children. Implementation of feeding protocols is associated with improved nutrition practices in critically ill children admitted in PIC. Benefits of introduction of enteral feeding protocol: early initiation of nutritional support, which leads to reduced need of parenteral nutrition, which leads to improved energy intake of estimated average requirement. Next, please. Implementation of enteral nutrition algorithm in PICU aids in reducing available EN interruption, improves in EN delivery, and decreases the dependence on parenteral nutrition in critically ill children. Next, please. Impact of withholding early PN completing EN in critically ill children, PEP-A-NIC trial. PEP-A-NIC trial compares early versus late initiation of parenteral nutrition when enteral nutrition reached to preset calorie target in critically ill children. फिर उसमें वही था लास्ट स्लाइड में कि अगर हम एंट्रल से नहीं पकड़ पा रहे हैं पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो हमें पेरेंट्रल पे स्विच कर जाना चाहिए, या पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी देंगे, साथ में हम उसके एंट्रल भी जितना दे पा रहे हैं वो देंगे। फिर highlights of ESPEN guidelines: there is significant gap in proper nutrition intervention, particularly among malnourished pediatric patients. Early intervention makes a difference. The timing and method of nutrient delivery is important. Next, please. A skilled nutritional support team is key differentiator. Ongoing monitoring is critical to avoid unintended caloric under or overfeeding. Determining how much nutrition is needed is an important factor. However, it's important to bear in mind that use of RDA values to guide protein prescription in critically ill pediatric patients is not advised. Nutritional support in special situations. Nutritional support in children with burns. इसमें 12 आवर्स ऑफ इंजरी के अंदर ही हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट स्टार्ट करना है। Children with burns require large amount of protein, 3 to 4.5 grams per kg of protein for children of 0 to 6 years of age. Carbohydrate delivery should not exceed 5 mg per kg per minute in children. Energy from fat should not exceed 35% of total energy intake. Next, please. यहाँ पर भी वही है कि मॉर्टालिटी, जिसमें हमने लेट इनिशिएशन हुआ और अर्ली इनिशिएशन हुआ। लेट जब इनिशिएट हुआ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन तो मॉर्टालिटी वाज हाई, टाइम ऑफ डेथ देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑब्जर्व। पीछे लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे भी सिग्निफिकेंट हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। नेक्स्ट प्लीज, इसको आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, अभी आ जाइए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन चिल्ड्रन विद कार्डियक डिजीज, जो हमारे हार्ट डिजीज के बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ रिड्यूस होता है, तो उसमें हमें न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला रीजन वाला भी इंपॉर्टेंट था लेकिन वो बहुत टाइम लेगा, तो इससे मेरा स्लाइड्स आ गया। वेट एंड लेंथ शुड बी असेस्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग पीआईसी एडमिशन। क्रिटिकली इल चिल्ड्रन रिक्वायर अप टू 3 ग्राम पर केजी पर डे ऑफ प्रोटीन टू अचीव अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट प्लीज। Next, please. Next, please. Next, please. Next. Key messages. Next, please. PEM is a major concern in children in PICU.
1 in every 5 children in PICU have acute or chronic malnutrition. इस पेशेंट्स में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है तो भी पेशेंट की फिजियोलॉजिकल चेंजेस मसल डिजनरेशन और कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड टर्नओवर अकर्स न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये मैं बात कर रही थी नेक्स्ट प्लीज प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होते हैं ये हमें ध्यान देना अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट नेक्स्ट प्लीज nutritional requirement in critically ill children admitted in PICU next please clinical data suggests that early enteral nutrition is strongly associated with lower mortality and morbidity in children in PICU and length of stay is decreased next please done enteral nutrition should be started within 12 hours of injury in children with burns 1.5 gram protein per kg body weight critically ill children में देना है और we can go as high up to 3 grams in burn patient. Next please. Next please. Next. Done? Is it done? आप लोग बोर हो गए थैंक यू कुछ समझा आप लोग ने बस ताकि बता दी कुछ समझ में आया 10% आया मैं टेस्ट भेजूंगी और जो फेल हो गया ना उसको हॉस्पिटल में मेरे साथ काम करना पड़ेगा हाँ बाहर सब आ जाओगे चलिए थैंक यू और किसी को अगर चाहिए हो तो प्लीज पीपीटी ले लेना आगे के लिए काम आएगी खाली टाइम में बैठ के कभी कभी क्वेश्चन पढ़ लेना ठीक है Thank you, ma'am, for such a brainstorming session. Next, I would like to invite on this stage Dr. Anuradha ma'am and Dr. Jasmine Santa ma'am to honor Dr. Induja Dakshak ma'am with moment. Ma'am, please, you are accordingly invited on the stage. The student at the back, please maintain the silence. Thank you, ma'am. We will conduct the post test of this workshop which via Google link. So you should scan this QR code mentioned over here. After that you can join your post test. Hello. Hello. Kindly scan the QR code.
हम स्कैन कर लिया लाइव पे लगा है Students, kindly maintain the decorum, please. फर्स्ट हाफ में जिसमें फर्स्ट में नेम है उसको आप लोग को जरूर पढ़ लेना ठीक है। उसके बाद जो भी डेलीगेट्स हैं जो हमारे टीचर हैं वो आए हैं और हमारे स्टूडेंट हैं उसके बाद उसको डाल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्कूल का नाम डालिएगा, कॉलेज का स्कूल का नाम, ईमेल आईडी है। उसके जस्ट बाद आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज हैं आपके, जो पहले फर्स्ट डे आपको मिले थे वही सेम एमसीक्यूज हैं, वही आपको फिर से करना है ठीक है। I would request our chairperson, ma'am, Dr. Ritu Singh, to distribute the memento to our committee members. Ma'am, you are accordingly invited on the stage for the further distribution of the support receiver. I request Mrs. Chandrapati Chauhan ma'am to please come forward on the stage to felicitate all the committee members with the certificates and memento. Ma'am, you are accordingly invited on the stage. I request Dr. Jasmine Santha J. ma'am to come to receive the memento. Ma'am, you are accordingly invited on the stage. Please give a huge round of applause. Thank you, ma'am. I would request from Dr. Sunil Sharma sir to receive the certificate of organizing secretary. Sir, you are accordingly invited on the stage. The students at the back, maintain the decorum, please. Thank you, ma'am and sir. I request to Dr. Iram Diva ma'am to receive the certificate with memento.
Thank you, ma'am. I request to Dr. Tupnam Sarasya, ma'am, Assistant Professor, to receive the certificate and memento as organizing co-secretary. Thank you, ma'am. I request Assistant Professor Danish Rizvi sir to receive the certificate memento as he was the organizing co-secretary in the program. Sir, please you are cordially invited to stage. Thank you, ma'am. and sir. I request to Sakshi Yadav, ma'am, nursing tutor with certificate and memento organizing co-secretary. I request Mrs. Archana Yadav ma'am, nursing tutor with certificate and memento as she was the organizing co-secretary member in the event. Ma'am, you are cordially invited on the stage. Please come forward. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I request to Mrs. Savitri Maurya, ma'am, as Public Relations Committee to receive the certificate. I request to Dr. Satish Chandra, sir, to receive the certificate. Now I cordially invite Ms. Aditi Srivastava and Ayushi Shukla for the anchoring. Thank you to our chairperson, ma'am, and Chauhan, ma'am. Now I would like to invite Dr. Jasmine Santha, ma'am, to distribute the certificate to our committee members.
request to Dr. Anuradha Tripathi ma'am to join for certificate distribution. Ma'am, you are cordially invited on the stage. Now, I would like to request to call upon on the stage Ms. Kajal Rai ma'am, as she was the food committee member. Ma'am, you are cordially invited on the stage. Audience, ma'am deserve the same. Thank you ma'am for a great work. We are pleased for the appreciation, ma'am. I would like to call Ms. Shreya Mishra for the transport committee. Ma'am, you are cordially invited on the stage. We are pleased for the appreciation of Shreya Mishra, ma'am. Thank you, ma'am, for the great services. We are pleased with the appreciation. Thank you, Shreya, ma'am. I would like to call Mrs. Gunja Vajpayee ma'am for the reception committee. Ma'am, you are cordially invited on the stage. Thank you for conducting and graciously praising. Now I would like to call students upon the stage. First, Satyam Tiwari, BSc Nursing third year student. Please come. Next, I would like to call Ankita Yadav, BSc Nursing second semester. Next, Subodh Pal, BSc second semester. Next, Sovet Raj, BSc first semester. Come forward. Now I would like to call Mr. Aditya for IT sector. Manage well our IT section. Thank you, sir, for such services. Now I would like to call Mr. Gulzar for transport committee. Sir, sir. I would request Mr. Aditya to collect the certificate of Gulzar sir on behalf of him. I request to Ms. Rekha ma'am for the certificate.
Siddhartha, you are invited on the stage. I cordially invite the student Mayank Chauhan to please come forward and collect his student certificate. Thank you, Mayank, for your services. A huge round of applause for Mayank. Now, I would like to request to call upon Vandana ma'am. Please, ma'am, come forward to collect your certificate. Thank you, ma'am, for the services you provided to us. Huge round of applause for Vandana ma'am. I would like to thank Bora Institute of Allied Health Sciences for their support and for attending this workshop. Kindly receive your certificate. Student Ashka, please give a round of applause for ma'am. Next, I would like to call GCRG for their support. I would like to thank to them. Presenting from the GCRT, now please you are correctly invited on this stage. Please collect your certificate. Thank you for coming, ma'am, and great support. Thank you, ma'am. Next, I would like to announce from the faculty, Lucknow Institute. You are cordially invited, ma'am. Sir, you are cordially invited on the stage. Please collect your certificate. Thank you. We are really thankful for the other colleges to attend this workshop and make this event very grand. Thanks to you. I would like to call Keshav, BSc Nursing third year student, for his support for the refreshment committee. Sir, a great appreciation for On behalf of Keshav, I would like to call his friend to achieve his certificate. Mayank, kindly collect the certificate of the Keshav as he is not present. I would like to invite Hoover's College of Nursing to receive the certificate.
बैठ जाओ मैं बैठ टीचर के पास बैठ A huge and heartfelt appreciation for the work that Keshav has done. Keshav, you are cordially invited on the stage. Student, BSc Nursing third year, please share the stage. Come forward. Come forward and collect your certificate. With this appreciation, we will move on to the call for Keshav. Thank you, ma'am. Thanks to all the students and the faculties. Thank you. Now, we would conclude this grand event, which was unable without your support, for the vote of thanks. Thank you. And the vote of thanks. On behalf of the organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this event. My heart fills with lots of gratitude and respect for our distinguished guests, speakers who are not only sparing their invaluable time, for us to praise this event, but also for enlightening us with their commendable talk on the topics. Thanks to all of you for clearing our concepts. Principal ma'am, please come on the stage and speak two words, please. I know that everybody has got exhausted. Still, I want to talk a few words because without unity or without teamwork, it is not a success. So it shows that it's power of unity. Within short time, we planned. I get emotional because in a short time, the outline teachers, my students only can got success. And with the power of unity, why I have told, because with the whole of our child education also have helped with me to get success all the time. Because I would like to thank Dr. Anuradha Tripathi ma'am and Dr. Aaron ma'am and Satish sir also. And great thanks I would like to tell Sunil ji as well, our Savitri ji also, because till late night also they will travel long day. Wherever I want to go, Sunil ji used to take the गाड़ी and wherever like resource person मिलने के लिए even everywhere, Hazrat Bengal, UPSMF, Atal Bihari Vajpayee University for the like dean sir and secretary sir, wherever I want to go, immediately he will come along with me. And we have taken granted and everywhere. And as well the resource persons also would like to thank, because behind the screen, all the resource personnel immediately they have agreed, and last moment also I have got all the like changes and everything, but still they have agreed and I have come. And especially I would like to thank Professor Jagdish sir, Principal Android International, and there is no word to express. They have given a lot of support so to grant success of this workshop. Thank you sir, thank you so much. And as well, all my faculty, there is no word, no one I cannot leave, all my faculty, because that invitation committee, if I have told Radha, so even the last 2-3 days, she did a great help that she has sent everybody to invite. So whatever is the small things have happened, so everything she did, and even started with Vishmi, she has started all the like collection of everything, and Vishmi she has got demand, whatever is that have happened, but in everybody have helped in all the ways. So I can't omit anybody. Everybody have helped so for the grand success of this event.
I thank everyone in the sense everyone A to Z. I do not need anyone for the grand success. It's a teamwork. It's not an individual thing. It's a teamwork. It's a power of unity. It's a grand success for them. Then I would like to tell that it's 3 to 4 districts have joined online and spot registration. It's around 600 registration have done. And that I would like to say that within 3 days. It's not a complete one, it's around 2.5 days work. It's got 3 days, like 600 registrations online and offline, spot registrations also. So thank you to everyone for all my faculty and students and those who have traveled long way from other institutions also and faculties also. Thank you. And last but not the least, I'm giving the thanks to my management, Ritu ma'am, that Ritu ma'am has given the platform to give the opportunity, ma'am, you can do it. So that's the reason that we have started this work. So otherwise it will not get, that this will not happen yet. So ma'am has to give the opportunity, because RNAV has to give the opportunity that webinar or national conference as well as the international conference also. Ma'am has to give the permission that RK we have to, but they say that you have to give. And as well, I have to thank Chandrapati Chauhan ma'am that behind the screen, ma'am has given the moral support to us that give us grand success. Thank you teachers, and thank you to everyone. Thank you. चलो मैम आपको You all are requested to come forward for the photo session. Now, I would like to request Dr. Jisni Santa ma'am to please offer the certificate to President Ji. President Ji, please come forward. Thank you for conducting such a great event. Please come forward. जो मांगे थे कह देना ना Thank you, ma'am. On behalf of this, on behalf of the organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this event. My heart fills with lots of gratitude and respect for our distinguished guest speakers for not only sparing their invaluable time for us to grace this event, but also for enlightening us with their commendable talk on the topics. Thanks you all for clearing our concept and enhancing our understanding pertaining to the subjects. You have indeed put best of your efforts to make this event unforgettable event. No event can take shape without a hard-working leader. It's our dedication and enthusiasm of our leaders and organizing chairperson, principal ma'am, chairperson ma'am, which made this event a huge success. I extend our heartfelt gratitude for them. Please, audience, give a huge round of applause for our chairperson and principal ma'am. मेरा भी दे दे भाई आप लोग साइड हो जाइए
अरे भाई आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आ रहा ना। वो तो हमारे भी नहीं आएगा तो फायदा क्या लाइक चलाने का? क्या करें? फोटो मिलेगा कैसे क्या क्या डील ये कौन है? सेट कर दो। मेरे तो वरना आएगा ही नहीं। मेरे को मेरा फोटो देना है काम कर देते उसके बाद ले नहीं, लेना। अपना नंबर दे देना मेरे को, ठीक है, डॉक्यूमेंट भेज देना, जो सॉफ्ट कॉपी का लेते हो मेरे से। रोहित फोटो खींच के अलग हो जाना। बैठ जा भाई, फोटो खींचेंगे। हाँ, साइड में जा खींच। क्लियर है क्या? मैं भी हूँ। ये तो ना सर सही से हटो साइड। वेट। Now we will conclude this workshop by national anthem. Please stand up. Congratulations आपको, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और सक्सेसफुल प्रोग्राम and I am proud of you. अभी नेशनल मीटिंग आप लोग घर जाइए और एंजॉय करिए, कल ऑफ है। Kindly take your position.
renditions for the national anthem. May you please cooperate? May you please? Thank you. उधर निकल जाओ। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की Thank you, ma'am. Thank you, everyone. लाइट कट कर दे। अरे दो गोल चलने दो, क्या करें हम? मेरे 2-3 फोटो अभी मेरे से अभी निकाल दो ना।